Factdates when it was an electric football first. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 35वां कराची जिमखाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल। आज का ये शानदार मैच फैक्ट डेट और मुकाबला डेनिम क्राफ्ट के दरमियान खेला जा रहा है। फैक्ट डेट ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। पहले ओवर के अख्ताम पर 17 रन बना रखे हैं फैक्ट डेट ने, जबकि इनिंग्स का डेनिम ने, और दूसरा ओवर जारी है। फहद अंजुम गवर्नर एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की जानिब से। आगा अंजुम है बैट्समैन, आगा साबिर हैं बैट्समैन। अच्छी बॉल थी, समझ न सके, किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। अच्छा स्ट्रोक और 4 रन का मज़ीद इजाफा डेनिम क्राफ्ट। बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन बगैर किसी नुकसान के। मैं नाम नॉमिनेशन में ये चाहता हूँ या किसी कंपनी में फिर यहाँ तो सलमान वो 24। अच्छा ओवर था फैक्ट डेट की जानिब से। 2 ओवर के अख्ताम पर 24 रन बगैर किसी नुकसान के डेनिम क्राफ्ट का स्कोर 24। 2 ओवर 24 रन बगैर किसी नुकसान के। कंफर्म पूछे बाबा उबैद उबैद मंगी उबैद मंगी उबैद मंगी क्लब रोड एंड की जानिब से सलमान को बॉलिंग करेंगे। तीसरा ओवर रिजवान सामना करेंगे उबैद मंगी का। राइट हैंड रिजवान, लेफ्ट हैंड टीम अच्छी है भाई खेलती है।
अच्छी बॉल थी। बॉल भी लगाना था कैसे तेरी वो और तो पहले बस कितनी देर में आ रहा है? वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की जानिब से। ब्लू लाइट जल जाती है ये जली नहायत ही उम्दा स्ट्रोक। मज़ीद 4 रन का इजाफा डेनिम क्राफ्ट का। तीसरे ओवर का खेल जारी है। 29 रन बना रखे हैं डेनिम क्राफ्ट ने बगैर किसी नुकसान के। उबैद मंगी हैं बॉलर, रिजवान उनका सामना कर रहे हैं। बाय का इशारा एम्पायर की जानिब से। इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं रशीद खान और मोहम्मद वसीम। खाना कितना चला तुम तो 11 बंदे को मार काटना है कितनी देर में आएंगे बोला भाई आएंगे बस सब आएंगे वो करते हैं 15 दिन के लिए नहीं आएगा कौन क्या गया 200 क्या गया मुझे कह रहे कि तुम्हारा बच्चा जो आगा साबिर मज़ीद 1 रन बनाने में कामयाब हुए। इस तरह 3 ओवर के अख्ताम पर डेनिम क्राफ्ट ने 31 रन बना रखे हैं बगैर किसी नुकसान के। 3 ओवर 31 रन। उठता हुआ स्ट्रोक और 6 रन। 6 रन का मज़ीद इजाफा।
आना अभी, अंपायर के पास जा जल्दी। फहाद अंजुम से बॉलर आगा साबिर का एक अच्छी 8 और 6 रन का इजाफा हुआ। नहायत ही अच्छा खेल आगा साबिर की जानिब से, मज़ीद 4 रन का इजाफा। 2 बॉलों पे 10 रन बना चुके। बीच में हवा से हो रहा है उसको सही कर नीचे से।  बड़ी उम्दा बैटिंग आगा साबिर की जानिब से, मज़ीद 4 रन का इजाफा हुआ है। बढ़ता हुआ स्कोर 45। चौथे ओवर का गेम स्कोर खेल जारी है। बहुत तेज़ी के साथ 1 रन बनाया। डेनिम क्राफ्ट 3 ओवर 5 बॉलों पे 46 रन बना चुके हैं। अब तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है।4 ओवर के अख्ताम पर 47 रन बना रखे हैं डेनिम क्राफ्ट ने, बगैर किसी नुकसान के। 47 रन 4 ओवर। मिर्ज़ा कमर बेग को हम कमेंट रूम में खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
35वां कराची टीम खाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल का ये मैच नंबर 5 है जो खेला जा रहा है फैक्टडेट और डेनिम क्राफ्ट के बीच। फैक्टडेट टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रहे हैं और अब तक 4 ओवर में 5वें ओवर का खेल हो रहा है। 46 रन बनाए हैं। शुक्रिया राशिद। 48 रन। उबैद मंगी फॉरेन की ओर से गेंदबाजी जारी रखेंगे। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। इसी फील्डिंग की सजावट से गेंद करेंगे बाहिने हाथ के बल्लेबाज को। मंगी की गेंद ओवर पिच गेंद ड्राइव किया उसे खूबसूरती के साथ। यूं ही गेंद को ओवर पिच गिरते देखा, बैकफुट पर गए, ड्राइव किया। गेंद में उछाल जरूर था लेकिन महफूज डीप गली पॉइंट बाउंड्री की तरफ किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आगा सिराज थे ये बल्लेबाज और सलामी रूप की जो साझेदारी है वो 52 रन की हो चुकी है अब तक। 47 रन लगाना। 47। मंगी की गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ रेंज गेंद बैकफुट पर गए, फिर से दिखाया है उसे पॉइंट बाउंड्री का रास्ता देखना पड़ेगा तब तक कि फील्डर जाके उसे फील्ड करें। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और जब तक कि ठीक फील्ड करके थ्रो करते हैं 2 रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छे तालमेल की दौड़। शुक्रिया राशिद। और ये 30 रन भी मुकम्मिल किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़, बहुत ही अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान, अच्छे तालमेल की दौड़। 47 रन। 47 यार कौन है बंदा सैटिस कर दिया यार मसूद भाई। उसी में तो 47 सैटिस कर दिया। मंगी अब ओवर द विकेट गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को। उनके लिए फील्डिंग की सजावट। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे हमारी तरफ आते हुए। मंगी दाहिने हाथ के ओवर द विकेट। इस बार गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ी सी ड्राइव किया था बैकफुट पर जाके लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। वहाँ रन लेने की हिम्मत ना दिखा पाए दोनों बल्लेबाज। जो ही फील्डर को गेंद पे झपटते देखा। तुम लोग मजाक लगी हुई है यार। नहीं कभी मजाक नहीं करे यार। एक बॉल फंडा है। और इस बार ओवर पिच गेंद को ड्राइव किया है अगले कदम पे डीप लॉन्ग ऑन से फील्डर जब तक क्या आके फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। उस 1 रन के साथ फैक्टडेट टॉस हार कर पहले बारी लेते हुए 56 रन बगैर कोई विकेट खोए 5वें ओवर का खेल हो रहा है और अच्छा सर्किल खेल रहे हैं कहना पड़ेगा यहाँ फैक्टडेट के बल्लेबाज। आगा साबिर पहुंचे 30 रन पर 16 गेंदों का सामना किया है। आगा साबिर ने 4 चौके और 1 छक्का लगाया है। खासी जाराना बल्लेबाजी की। इस बार शफल करते हुए टर्न किया है ऑन साइड पे तब तक कि डीप मिड ऑन के फील्डर आके उसे फील्ड करते। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का और उस 1 रन के साथ 5वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 5वें ओवर के इख्तिताम पर 57 रन बगैर कोई विकेट खोए फैक्टडेट टॉस हार कर पहले बारी लेते हुए 20-20 के इस मैच में। रिजवान खेल रहे हैं 23 रन पर 13 गेंदों का सामना किया है। 4 चौके लगाए हैं रिजवान ने अपनी इस बारी में और 176 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं रिजवान। जबकि उनके सामने आगा साबिर हैं जिन्होंने 31 रन बनाए हैं। 17 गेंदों का सामना किया है, 4 चौके और 1 छक्का लगाया है और 182 का स्ट्राइक रेट है और मौजूदा रन औसत है वो 11.40 और इसी तरीके से प्रोजेक्टेड स्कोर 228 बनता है।
35वां कराची जिम खाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल टूर्नामेंट उमर एसोसिएट खेला जा रहा है यहाँ कराची जिम खाना के ग्रीन कारपेट पर। आज के मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं एम्पायर वसीमुद्दीन और एम्पायर रशीद। हमारे साथ हमेशा की तरह पीसीबी के स्कोरर राशिद असलम भी यहाँ मौजूद हैं। तब्दीली हुई है, चेंज हुआ है। और यहाँ पवेलियन की ओर से गेंदबाजी में तब्दीली, अख्तर हुसैन आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने। अख्तर हुसैन बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, ओवर द विकेट गेंद करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज को। और इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, गेंद की लाइन से दूर है, गेंद को मिस किया, गेंद गई विकेट कीपर के पास। अख्तर हुसैन बाहिनी हाथ से गेंद करेंगे, बाहिनी हाथ के बल्लेबाज लुटता हुआ शॉट लेकिन महफूज, गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा, 4 रन। आगा साबिर हैं ये बल्लेबाज जो कि अच्छी बारी ले रहे हैं और अब तक 35 रन कर चुके हैं, 19 गेंदों का सामना किया है, 5 चौके और 1 छक्का लगाया है। अब आगा साबिर ने अपनी इस बारी में और इस बार फिर से निकले हैं, अपने कदमों का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया है, ड्राइव करता हुआ उड़ता हुआ शॉट था लेकिन महफूज, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत ही जाराना रूप धारा हुआ है कहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों ने, खास करके आगा साबिर जो कि 39 रन पर पहुंच गए हैं, 20 गेंदों का सामना किया है, 6 चौके और 1 छक्का लगाया है और 195 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं आगा। और इस बार ये गेंद लेग ब्रेक गेंद बाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर आती हुई इस गेंद को बैकफुट पर गए, स्पिन के साथ ही खेला ऑन साइड पे, तब तक कि डीप लॉन्ग ऑन से फील्डर आके उसे फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का और इस 1 रन के साथ 65 रन। अख्तर हुसैन फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर फील्डिंग की सजावट में तब्दीली करते हुए। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे, ऑन साइड पे डीप मिड विकेट लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए और डीप लॉन्ग ऑन भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए और एक स्क्वायर लेग। ये है ऑन साइड की फील्ड। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, देखना पड़ेगा फील्डर की पहुंच से दूर, एक टप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथ में गेंद गई। रन लेने का मौका था बल्लेबाजों के लिए, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अख्तर हुसैन अब गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे आगा साबिर जो कि 40 रन पर खेल रहे हैं, अच्छी बारी ले रहे हैं, 190 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, जबकि उनके सामने रिजवान का स्ट्राइक रेट 170 है। अख्तर अब ओवर द विकेट और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया है, देखना पड़ेगा फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। गेंद एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा, 4 रन। 6ठे ओवर के इख्तिताम पर 71 रन, 71 कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर और ये सर्किल का खेल ख़त्म हुआ है। सर्किल बहुत ही अच्छा खेला है दोनों ही सलामी रूप के बल्लेबाजों ने। आगा साबिर और रिजवान की साझेदारी 71 रन की हुई है, जिसमें से 44 रन आगा साबिर ने बनाए हैं। 22 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 1 छक्का लगाया है। वॉल प्लेड आगा उनका साथ दिया है पूरी तरीके से। रिजवान ने जो कि 24 रन बनाकर 14 गेंदों के साथ 4 चौकों की मदद से खेल रहे हैं। यहाँ फॉरेन की ओर से गेंदबाजी में तब्दीली नजर आ रही है। और वहाँ गेंदबाजी में तब्दीली, जुल्फ़िकार लहरी आए हैं। जुल्फ़िकार लहरी दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, गालिबन ओवर द विकेट गेंद करेंगे। उनके लिए फील्डिंग की सजावट
6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे और 3 ऑन साइड पे। ऑन साइड पे लॉन्ग ऑन लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप मिड विकेट भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप स्क्वायर लेग भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए। सर्किल का खेल खत्म हुआ है क्योंकि फील्ड खुल गई है। ऑफ साइड पे भी लॉन्ग ऑफ के फील्डर लगभग बाउंड्री लाइन को छू रहे हैं और इसी तरीके से एक्स्ट्रा कवर पर भी एक फील्डर जो कि बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब खड़े हैं। गली पॉइंट कवर, यह है ऑफ साइड की फील्ड। रिजवान सामना करेंगे। जुल्फ़िकार लहरी का इस बार टर्न किया है ऑन साइड पे। लहरी ने खेलते ही दौड़ पड़े तब तक के विकेट कीपर जाके स्क्वायर लेग के जानी फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और उस 1 रन के साथ 72 रन बगैर कोई विकेट खोए फैक्टडेट इंजीनियरिंग टॉस हारकर पहले बारी लेते हुए 20-20 के इस मैच में कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर खेला जाने वाला ये टूर्नामेंट का 5वां मैच है जो कि खेला जा रहा है फैक्टडेट और डेनिम क्राफ्ट के बीच। डेनिम क्राफ्ट टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रहे हैं। अब तक कोई विकेट भी चटखाने में कामयाब नहीं हुए। अब लहरी अब राउंड से विकेट गेंद करेंगे दाहिने हाथ से। गेंद अच्छी गेंद, लेग ब्रेक गेंद, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर आती हुई इस गेंद को खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से चूके और गेंद गई स्लिमिड ऑफ की जानिब, जहां बॉलर ने आके खुद ही फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। लहरी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। फ्लाइटेड गेंद, बहुत अच्छी गेंद और पूरी तरीके से उम्मीद के साथ मचलते हुए अंदाज में एम्पायर रशीद से इल्तिजा जरूर किए। एम्पायर का इशारा देखना होगा, लेग बाय का इशारा एम्पायर रशीद की जानिब से। गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, जिसकी वजह से एम्पायर को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। लेकिन वेल बोल्ड आगा साबिर को जिस तरीके से कदमों को इस्तेमाल करते देखा, गेंद में तब्दीली की थी, थोड़ा सा फास्टर वन कहेंगे हम गेंद की थी। और इस बार फिर से अच्छी गेंद, फिर से बहुत अच्छी गेंद, फिर से इज्जत के साथ खेलना चाहते थे, चूके फिर भी जल्दी करना पड़ी इस बार, जहां बॉलर ने आके फॉलो थ्रो में फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। जुल्फ़िकार लहरी दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंद करेंगे आगा साबिर को। आगा साबिर 44 रन पर खेल रहे हैं और इस बार गेंद फिर से अच्छी गेंद, फिर से लेग ब्रेक गेंद, फिर से स्पिन को समझते हुए ऑन साइड पे धीरे से खेले हैं मिड ऑन की जानिब, जहां फिर से एक बार आगा साबिर के इस शॉट को विकेट कीपर ने भी आके गैदर किया और एक और डॉट बॉल यहाँ जुल्फ़िकार की जानिब से। जुल्फ़िकार लहरी अब तक सिर्फ 1 रन दिया है, आखिरी बॉल कर रहे हैं अपने ओवर की और इस बार थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। गेंद को समझते हुए बैकफुट पर गए, विद द स्पिन ही टर्न किया है ऑन साइड पे। तब तक क्या डीप मिड ऑन से आके फील्डर फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और उस 1 रन के साथ 75 रन 7वें ओवर के अख्तिताम पर 75 रन 75 कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर पुट इनटू बैट बाय और वहां फिर से एक बार हम देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी में तब्दीली नजर आ रही है। जुल्फ़िकार लहरी ने अच्छा किफ़ायती ओवर किया है और सिर्फ 2 रन दिए हैं, काफ़ी कंजूसी से किया है ये ओवर। जुल्फ़िकार लहरी ने बल्लेबाजों के बल्लों पे ताला लगा के रखा है, जो कि बल्लेबाज बहुत ही जारहाना मूड में नजर आ रहे थे, खास करके आगा साबिर। बॉलिंग में तब्दीली हुई है यहाँ पवेलियन की ओर से। खुर्रम बलोच आए हैं।
खुर्रम बलोच के लिए फील्डिंग की सजावट, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे, इसी फील्डिंग की सजावट के साथ डीप कवर लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप लॉन्ग ऑफ लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए खुर्रम बलोच अपनी फील्डिंग की सजावट फिर से तब्दील करते हुए पवेलियन की ओर से दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज खुर्रम बलोच राउंड ऑफ एक्शन से गेंद कर रहे हैं। पहली गेंद लो ट्रेजेक्टरी के साथ की गई, इस गेंद को बैकफुट पर जाते हुए खेला है पॉइंट पर, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। खुर्रम बलोच फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। बलोच की ये गेंद थोड़ी फ्लाइटेड गेंद थी, इसको पूरी तरीके से लिया है, मिडिल स्टंप से खेल दिया है उसे डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा, 4 रन। आगा साबिर थे ये बल्लेबाज जो कि 49 रन पर पहुंच गए हैं और सिर्फ 1 रन की दूरी पे हैं अपनी शानदार सेंचुरी से। आगा साबिर अच्छी बारी ले रहे हैं, 49 रन पे खेल रहे हैं, 29 गेंदों का सामना किया है, 8 चौके और 1 छक्का लगाया है आगा साबिर ने। खुर्रम की गेंद फिर से इसको ऑफ स्टंप के बाहर से लिया है, इस बार खेला है उसे डीप मिड ऑन की जानिब और इसी के साथ 50 रन भी मुकम्मिल किए आगा साबिर ने। वेल प्लेड आगा साबिर, अच्छी बारी ली है आगा साबिर ने, 50 रन मुकम्मिल किए 30 गेंदों पे, 8 चौके और 1 छक्के की मदद से। 166 का स्ट्राइक रेट है आगा साबिर का। आगा साबिर अब गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज रिजवान को, और इस बार खेलना चाहते थे आगा साबिर, चूंकि एक उम्मीद के साथ एम्पायर की तरफ देखा जरूर था लेकिन वहां मौके जैसी बात कोई नहीं थी। जी वालेकुम सलाम जी जी बोले कहाँ से? लोधी कंपनी लोधी लोडिस्ट, तो किस हवाले से जी? सॉरी एक ही अपने देखो अपना ये पड़ी हुई है। अच्छा 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 नहीं ये तो हम आपको भी दे देंगे। तो अपने कोई मुझे वो लिंक वगैरह सेंड कर दें। एक काम करें, मुझे मैसेज कर दें जी, हाँ लिंक भेज दीजिए। ठीक है थैंक यू बहुत शुक्रिया। 8वें ओवर के अख्तिताम पर 83 रन बगैर कोई विकेट खोए, और यहाँ हम अपने कमेंट्री बॉक्स में उमर खान को भी खुश आमदीद करते हैं जो कि 10 ओवर के बाद जिम्मेदारियां संभालेंगे अंग्रेज़ी की कमेंट्री की। और वहाँ फार एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारियां फिर से दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज जुल्फ़िकार लहरी के हाथ में गेंद नजर आ रही है। पिछला ओवर जुल्फ़िकार लहरी ने बड़ा कंजूसी वाला ओवर किया था, बड़ा किफ़ायती ओवर किया था, सिर्फ 2 रन दिए थे लहरी ने, खासी हद तक बैकफुट पर रखा था बल्लेबाजों को जो कि बहुत जहराना बारी ले रहे थे दोनों ही बल्लेबाज, और तकरीबन 160 के एवरेज से एक स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और जो रन औसत उन्होंने सजाया है अपने बल्लेबाजों के लिए 10.38 का, जिसके कराची जिम्खाना रमजान विकेट फेस्टिवल ऐड करती है, उससे ये होगा कि जो आपकी सर्च रीच है ना उसमें फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि अगर आप ये जैसे पिछले हमारे जुल्फ़िकार लहरी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, दाहिने हाथ से दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे, इसी फील्डिंग की सजावट के साथ लहरी की गेंद लेग ब्रेक गेंद थी, खेलना चाहते थे अगेंस्ट द स्पिन, चूके पूरी तरीके से गेंद की उछाल से गेंद गई विकेट कीपर के पास, और किस्मत वाले रहे कि विकेट कीपर और एक स्लिप इस बात के लिए तैयार थे कि उनके बल्ले का कोई भी किनारा लगता
पॉइंटिंग हमारे पास सर्च से आएंगे। अब स्लिप से फील्डर को हटा लिया गया है, लेकिन यहाँ बात समझ नहीं आई, इस बार चूके थे बल्लेबाज। स्लिप को हटाने का मकसद देखना पड़ेगा, गेंदबाजी किस तरीके से करते हैं, तब्दीली क्या करते हैं। और इस बार फिर से मिडिल स्टंप पे पड़ी इस गेंद को, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, इसको खेला है ऑन साइड पे बैकफुट पर जाते हुए। तब तक के लॉन्ग ऑन से फील्डर आके फील्ड करें, मौका है बल्लेबाजों के लिए। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ 84 रन बगैर कोई विकेट खोए। डेनिम क्राफ्ट टॉस हारकर पहले बारी लेते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में। जुल्फ़िकार लहरी अब बाहिने हाथ के बल्लेबाज आगा साबिर के लिए फील्डिंग की सजावट में तब्दीली करते हुए। आगा साबिर के लिए 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे लॉन्ग ऑन लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए। इस बीच आगा की गेंद अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई इस गेंद को टर्न किया है गेंद के स्पिन के साथ ही बैकवर्ड शॉट लेग की जानिब। जहां फील्डर मौजूद वहां रन भी मौजूद, लेकिन अंपायर का इशारा यहाँ लेग बाई का है। और इस तरीके से एक और रन यहाँ फैक्टडेट की झोली में लेग बाई के रूप में। और अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज रिजवान के लिए फील्डिंग की सजावट में तब्दीली। इस बार भी 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज लहरी, और इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, पूरी तरीके से चूके गेंद ने बल्ले का डीपरी किनारा लिया और सीधी गई यहाँ फाइन लेग की तरफ। एम्पायर का इशारा बाई का, क्योंकि विकेट कीपर पूरी तरीके से चूके थे। और यहाँ कहना पड़ेगा किस्मत वाले रहे बल्लेबाज भी। वेल बोल्ड लहरी, जुल्फ़िकार लहरी अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं। 1.4 ओवर कर चुके हैं और अब तक सिर्फ 3 रन दिए हैं। और बल्लेबाजों के बल्ले पर खासी हद तक ताला सा लगाया है जुल्फ़िकार लहरी ने गेंदबाजी से। और इस बार मिडिल स्टंप से उठाया है, देखना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत शॉट, भरपूर कुव्वत वाला शॉट कहना पड़ेगा। रिजवान ने अपने बल्ले का वो गूदा दिखाया जो बीचों बीच होता है, खेल दिया उसे डीप मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से। एम्पायर का इशारा 6 रन। और इन 6 रनों के साथ 93 रन 93 बगैर कोई विकेट खोए। डेनिम क्राफ्ट टॉस हारकर बारी लेते हुए 20-20 के इस मैच में। और यहाँ कहना पड़ेगा बड़े दिल वाला शॉट खेला है यहाँ रिजवान ने। जुल्फ़िकार लहरी जो काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे थे, इस बार उन्हें बाउंड्री का रास्ता दिखाया 6 रनों की। और इस बार ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लो ट्रेजेक्टरी के साथ की हुई गेंद को खेला है बैकफुट पर। तब तक के डीप कवर से फील्डर फील्ड करें, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस 1 रन के साथ 90 ओवर के इख्तिताम पर 94 रन 94 10.44 का औसत है। प्रोजेक्टेड स्कोर है 209। और इस तरीके से ये आगा साबिर जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, 50 रन की है, 32 गेंदें खेली हैं, 8 चौके और 1 छक्का लगाया है। और 156 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। एक मौके पे आगा साबिर 190 के स्ट्राइक रेट से बारी ले रहे थे, लेकिन तारीफ करना पड़ेगी वहाँ जुल्फ़िकार लहरी की। जब से गेंदबाजी संभाली थी कुछ रन औसत काबू में किया, लेकिन फिर भी सामने वाले बल्लेबाज रिजवान भी अच्छी खासी बारी ले रहे हैं। 159 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 35 रन बनाए हैं, 22 गेंदों का सामना किया और 4 चौके और 1 छक्का लगाया है रिजवान ने भी। और ये सलामी रूप की जो बल्लेबाजी है उसकी साझेदारी अब तक 94 रन की हो चुकी है। और अब तक कोई ऐसी मौके जैसी बात नहीं दी दोनों बल्लेबाजों ने। और इस बार बहुत अच्छी गेंद, खुर्रम बलोच थे ये गेंदबाज, चूके बल्लेबाज पूरी तरीके से, गेंद थोड़ी नीचे भी रही। खुर्रम बलोच फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। और इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेला है उसे मिड ऑफ की जानिब। तब तक के डीप मिड ऑफ से फील्डर आके फील्ड करें, मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। खुर्रम बलोच फिर से तैयार। खुर्रम बलोच ने भी अब तक काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की है। 1.2 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए हैं।
खुर्रम अब गेंद करेंगे बाहिने हाथ के बल्लेबाज आगा साबिर को, और इस बार आगा साबिर ने लिया है उठता हुआ शॉट, देखना पड़ेगा फील्डर की पहुंच से दूर, एक टप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथ में, लेकिन इस बीच एक रन आसानी के साथ पूरा किया। भरपूर शॉट ना खेल पाया इस बार खुर्रम बलोच, फिर भी एक रन के लिए जरूर खेल बैठे। खुर्रम बलोच गेंद करेंगे अब रिजवान को, ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जा रही थी, अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करके कट करते हुए पॉइंट की जानिब खेले, जहां पॉइंट पर फील्डर मौजूद। फील्ड करते फील्डर को जैसे ही देखा चौकन्ने अंदाज से रन लेने की हिम्मत ना दिखा पाए दोनों बल्लेबाज, और अपने कदम वापस क्रीज में रखे। खुर्रम फिर से तैयार, और इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई तकरीबन फ्रूटल अंदाज की गेंद खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया, गेंद गई विकेट कीपर के पास, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। खुर्रम बलोच 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे 4 ऑफ साइड पे, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, बहुत बड़ी गलती कर बैठे और अपने बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा सदमा दे बैठे हैं शुरुआत कहना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही अच्छी साझेदारी रही है। इस वक्त चालाकी से गेंद भी की थी खुर्रम बलोच ने, और इसी के साथ 10वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 10वें ओवर के इख्तिताम पर 96 रन, एक विकेट खोकर अभी अभी विकेट खोई है डेनिम क्राफ्ट ने, रिजवान को आउट किया है। और इसी के साथ मैं आगे का आंखों देखा हाल अपने साथी कमेंटेटर उमर खान को देता हूं, जो कि अंग्रेजी में आगे 10 ओवर के लिए कमेंट्री जारी रखेंगे। ओवर टू उमर खान। Thank you, Mirza Qamar Beg. Match number 5 of the 34th Karachi Gymkhana Umar Associates Ramzan Cricket Festival underway. The two teams in action today are Denim Craft and Factdate Engineering. कब से स्टार्ट कर रहे हैं? अच्छा, क्लास 1 वीक, अच्छा, टाइम ड्यूरेशन 1 आवर 2 आवर पर डे? आप बताओ ना। नहीं, 1.5 आवर एक सेशन, 16 सेशन, ठीक है। With the first wicket down finally for Denim Craft. Wonderful opening stand. 96 for 1 Denim Craft. Yesterday, Denim Craft failed to have a good start. Covered it up today. First ball of the 11th over. A left arm Chinaman. Ball guided towards the cover region for 1. So far, it's been Agha Sabir's day, batting beautifully on 52 of just 34 balls. Hit 8 boundaries and a 6. Opening stand of 96 with Rizwan, who got dismissed in the previous over, stumped by Khurram Ali, bowled Khurram Baloch on 36. Zulfiqar Lahiri bowling his third over now. Ahmad Zishan on strike, this time the ball pitched leg stump, guided towards the fine leg region.
The batsman ran the first one hard and easily managed the second runs. 2 runs added to the total. 99 for 1 now. Denim Craft. So comparing Denim Craft's batting to their yesterday's match, they lost 4 wickets in the power play yesterday, and today it seemed like a whole different team because Agha Sabir was hitting the ball all over the park. He's still there on the crease. Can he convert this innings into a big one? Zulfikar Lahiri this time around, ball pitched on middle stump, braked and beautifully cut towards the deep point region. 4 runs added to the total. Ahmed Zishan took his time. He had all the time to go on the back foot, pace the gap between the point and cover region. So 100 up finally for Denim Craft, only in the 11th over. They have got a wonderful launching platform now. They must be eyeing 200 from here. Zulfikar Lahiri in for his 4th ball of the delivery. This time short ball again. Wanting to repeat the shot, but this time ball straight to the short third man fielder. 1 run added to the total. 104 for 1 now. Denim Craft. The batting at 9.75 runs an over. With ball of the over this time, forward defensive shot. No run added. So apart from that one boundary, it has been a decent over by Zulfikar Lahiri. So last ball of the 11th over. This time short delivery. The batsman had a wonderful opportunity to get more runs here. Couldn't connect, but wide ball was declared by the umpire. So we have to re-bowl the last ball of the 11th over. 105 for 1. The bowler is going to change sides. Ball around the wicket. This time a quicker delivery. Batsman beaten for pace maybe. So no harm done, no run added. 105 for 1 after 11 overs. The current run rate is 9.55 runs an over. If they go by the same run rate, the projected total is 194. They would definitely like to get a few more than the projected score, possibly, and idealistically they'll be aiming at anything above 200 from here. They've got the platform. 105 for 1 after 11 overs, 9 overs remaining. Agha Sabir batting beautifully on 52 at a strike rate of 144 with 8 boundaries and a 6. Khurram Baloch will bowl his 3rd over. He's picked up 1 wicket so far, given away 9 runs. Ahmed Zishan on strike. First ball of the 12th over, well bowled outside off stump. Batsman got an edge, a lucky edge, but good enough to add 2 runs to the total. 107 for 1 now. Now every run here counts.
Second ball of the 12th over, Khurram Baloch. Right arm over the wicket. This time another ball right in the good area, and it was a repeat of the previous ball. This time it was deliberate by the batsman. 2 more runs added to the total. And the bowler would have a field change. Maybe if the short third man fielder could be a bit finer, he could avoid saving some runs. So 4 runs of the first 2 balls so far. Third ball of the over. Khurram Baloch. This time ball was a bit wider, bowled with flight. Guided towards the long off region for 1. 110 for 1 now, Denim Craft. 3 balls remaining in the 12th over. And now Agha Sabir is on strike. He's well set, timing the ball beautifully. And he must be eyeing the mid-wicket region. And that it is. Striked it towards the long leg boundary. 1 run added to total, couldn't middle the ball. But that's his go-to area. We've seen he scored majority of his runs in the mid-wicket long leg region. So 6 runs of the first 4 balls of this over. Ahmed Zishan batting on 12. Agha Sabir batting on 53. This partnership is now 15 of 10 balls. So even the loss of wicket did not affect the momentum of the game. They're rotating the strike, getting an odd boundary, and that's what's required right now. 8-9 runs and over. 5th ball of the over, this time was a fuller delivery hit towards the deep, long on region. And no chance for the fielder. 4 runs added to the total. And smart batting. They're rotating the strike and hitting the odd one for the boundary. Just as I said, the batsmen were able to get 4 important runs. This is the second boundary for Ahmed Zishan. 10 runs off the first 5 balls of this over. 115 for 1 Denim Craft. This time a shorter delivery, beautifully pierced between the short third man and point region. The second boundary of this over, back-to-back boundaries, and in the previous over as well, Ahmed Zishan got a boundary on a similar shot. This time around, middled the ball beautifully, no chance for the fielder. But certainly a very good over, which started off as a decent over. 8 runs conceded of the last 2 balls, so 14 runs of the 12th over. 119 for 1 now Denim Craft. Batting at 9.92 runs and over. And definitely they'll be eyeing 200 plus from here. Ahmed Zishan has clear intentions. He's not wasting any time. 20 runs of 8 balls, including 3 boundaries, 3 beautiful boundaries. He hasn't slogged. He's played proper cricketing shots. Pierced the gaps, looked for the gaps. He's running hard, getting 2 runs occasionally. So change in bowling from the pavilion end. Rizwan Qureshi will replace Zulfikar Lahiri. 8 overs remaining in the innings, 119 for 1, Denim Craft. Building up onto the solid foundation laid by Agha Sabir and Rizwan. Agha Sabir is still on the crease, batting at 53. But since Ahmed Zishan has came in, he's took over.
He's done the majority of the scoring in this partnership so far. He scored 20 runs from the 23-run partnership. This time, bowled towards the leg side, clipped towards the short fine leg for 1. So Agha Sabir is playing smart cricket. He's seeing that Ahmed Zishan is timing the ball well. He's giving him most of the strike. So Rizwan Qureshi bowling his first over for the day. Ahmed Zishan looking at the vacant areas. Second ball of the 13th over. This time a flighted delivery and guided towards the long leg region. He's running the first one hard and changes his mind. Good decision in the end. Would have been a difficult run if he continued. Not 1 run added to the total now. 121 for 1 in the 13th over. Rizwan Qureshi, right arm around the wicket. This time used his fade and hit it over mid-wicket, but haven't timed it well. And Tariq Haroon, a well-judged catch. Not easy when the ball is swirling in the air. Agha Sabir is the batsman dismissed. He was quiet for a while, tried the big shot and lost his wicket. A beautiful batting by Agha Sabir. He scored 54 of 39 balls, 8 boundaries and 1 6. Batted at a strike rate of 138 and given a solid foundation for his team, Denim Craft. Now we have to see how the coming batters bat. The way Ahmed Zishan has batted, he definitely has 200 on his mind. But we have to see how the coming batsman bats. So a chance for a Factdate team to pull back, get some tidy overs, get some quick wickets. So fall of wickets can change momentums, but T20 is a funny game. 1 good over for the bowling team, 1 good over for the batting team, and the game certainly changes. So there's an opportunity for Factdate to bowl in some quick overs. The current run rate of 9.68, they would like to bring that run rate down, because if Denim Craft continues with the same run rate, they'll definitely be ending up somewhere around 200, which won't be an easy target, although it's a very good batting track. Next ball, short ball, try to find the gap towards the cover region. No run added as the ball straight went to the cover fielder. This time he's able to find the gap. 1 run added to the total, 122 for 2 now. 1 ball remaining. Adnan is the new batter. Last ball of the over. Quick run taken towards the cover region. The 123 for 2. Rizwan Qureshi bowled a successful over. His first over of the day, gave away just 4 runs and picked up the important wicket of Agha Sabir, who was batting well, and he was set on 54. He did the damage in the power play, could not build up his innings from then. But Ahmed Zishan has taken over ever since he's come to the crease. Batting on 22 of 11 balls at a strike rate of 200. He has hit 3 boundaries so far.
Now Adnan taking guard. Another change in the bowling. Akhtar Hussain. Akhtar Hussain was expensive in his first over. He gave away 14 runs. And now we'll try his luck with his second spell. Left arm over the wicket. The batsman used his feet. There was no shot mid-wicket. He wanted to sneak 2 runs, but the bowler was quick to field the ball on his own. Over 1 run added, 124 for 2. Ahmed Zishan now on strike. He must be eyeing and looking for a boundary here. This time quicker delivery on the legs. Nudge towards the deep mid-wicket region. 1 run added to the total. Another run added. So the Denim Craft batters are happy to rotate the strike for now. Next ball of the over. This time Duwood striked it well, but straight to the fielder. So another run added. The 4 singles of the first 4 balls. Factdate will be happy if they can finish the over well with singles. Denim Craft would be looking for boundaries here. This time ball towards the pads. Another run added. So 5 singles of 5 balls. Keeping in mind that we're going towards the end of the first innings. A very good over, a decent over so far. 5 runs of the over. We have to see if he can finish well or not. The last ball, used his feet, launched it and drop. At this level, catches like these must be taken. The ball was ballooned in the air. A simple, straightforward chance for the point fielder, Rizwan Qureshi. It's a bit difficult to sight the ball, as it's difficult from this side of the ground to sight the ball because of the background. We've seen fielders complain in the past that they lost the sight of the ball. Could be the reason, but it should have been taken. Ahmed Zishan was the batter. He looks dangerous and he has got a chance. We have to see how much can he make Factdate pay for this drop catch. But it was a decent over by Akhtar Hussain. Gave away just 6 singles of the previous over. And now Rizwan Qureshi will come into bowl. Would definitely try to make up for the drop catch. He's picked up a wicket and given away 4 runs in his first over. He would like to repeat that as well in this over. Pick up a wicket and be economical. So flighted delivery, used his feet and another opportunity for a catch and taken. Khurram Baloch is the fielder. So Rizwan Qureshi, who dropped the catch of the last ball, picked up his man on the first ball of the 14th over, 15th over, 129 for 3 now. Alhamdulillah, snack, I guess. इशा के बाद मैं आपके पास लेट आ सकता हूँ 11 बजे के करीब, 11 के आसपास। चले मैं आपको रिंग करता हूँ, क्योंकि मैं असल में ना फ्री होता, अभी इफ्तारी से पहले फ्री होता हूँ और फिर इफ्तारी के बाद मैं 11 तक फ्री होता हूँ। नहीं ठीक, मैं आपको कॉल करके आऊँगा, मैं कॉल करके पूछता हूँ। ठीक है, चलो ओके।
So Ahmed Zishan, who was looking dangerous, he got a life on the previous ball, could not make most of it and got dismissed on the very next ball. The coincidence is that Rizwan Qureshi was the fielder who dropped the ball, dropped the catch, and on the very next ball, he picked up the same man while bowling. So he's made up for his mistake. Ahmed Zishan dismissed for 25. He batted well, hit 3 boundaries, and now 2 new men on the crease. Kashif Sajjad is the new batter. He'll be accompanying Adnan, and certainly the run rate has dropped to 9.11 with 2 new batters on the crease. But this is the time Denim Craft want to accelerate, and Factdate would like to squeeze in some economical overs. So dot ball. The previous over went for 6 runs only. This one has given away no runs so far and picked up a wicket. Flighted delivery this time. Used his feet. Completely misjudged the line of the ball. Got a healthy outside edge. And 1 run added to the total. So 1 run of the first 3 balls of this over. Factdate are now making a comeback into this game. 4th ball of the over, this time forward defense, no run added, so a very good over. So far only 1 run of the first 4 balls and an important wicket of Ahmed Zishan. 5th ball of the over, running the first one hard, but only managed to get 1 run. So 2 runs of the first 5 balls of the 15th over. 131 for 3 now, Denim Craft. This time used his feet again, but very well bowled. He saw the batsman coming, dragged the ball towards a shorter length, did not give any room to the batter. A beautiful, brilliant over. 15th over of the innings, gave away just 2 runs and picked up a wicket. And Rizwan Qureshi has pulled back. This innings is put a break to the run scoring of Denim Craft, given away only 6 runs in his 2 overs and picked up 2 wickets. Completely broke in the momentum of Denim Craft, who were going smoothly. At almost 10 runs and over, the run rate has dropped down to 8.73 now. Last 5 overs of the innings, where they were eyeing 200, suddenly 180 looks like a challenge. So 131 for 3 after 15 overs. This time shorter delivery, but the batsman failed to find the gap. No run added to the total. Ball fielded by the cover fielder. Akhtar Hussain bowling his 3rd over. This time another short delivery. Guided towards the deep cover region. They ran the first one hard, but the fielder was quick on his feet. Only 1 more run added. So singles won't bother Factdate right now. They'll be happy to give away singles. 3rd ball of the 16th over. This time the ball kept a bit low. Got the inside edge of the batter. 1 run added to the total. So far 2 runs of the first 3 balls. Kashif now on strike. This time another wicket to wicket delivery, no run added. So smart bowling by Factdate. They are picking up wickets, they're not giving easy singles. They're bowling wicket to wicket. So just 2 runs of the first 4 deliveries. This time shorter delivery, middled the ball, but straight to the deep cover fielder. Only 1 run added. So the last few overs have been brilliant by Factdate. No boundaries in the last few overs. Last ball of the 16th over. Rizwan has given away only 3 runs of 5 balls.
Short ball this time, used his feet. Ball went towards the mid-wicket region, only 1 run added to the total. So a lovely over, keeping in mind the circumstances, the last 5 overs of the innings. Only 4 runs conceded. And credit goes to Factdate, who's pulled the game back. If we look at the previous 5 overs bowled, Denim have managed to score only 30 runs in the last 5 overs, and they've picked up 2 wickets. ऐड करवा दूंगा शाम मैच 2 मैच 135 वो इनका प्रोफाइल बनेगा प्रोफाइल में ऐड करें. First ball of the 17th over. The batsman tried to make some room, but no real damage done. 1 run added to the total. Rizwan Qureshi has bowled brilliantly so far. He's picked up 2 wickets and given away 7 runs. He's changed the momentum of the game. Now we have to see, can he finish well, because both the batsmen will be eyeing the big boundaries now. This time around, slower delivery, inside out towards the long off region, but couldn't find the boundary. The ball stopped after bouncing. There was no power behind the shot. It was more of a lob shot, but 2 runs added to the total. 138 for 3. We're into the 17th over. Rizwan Qureshi bowling brilliantly. This time bowled wicket to wicket. There's an appeal, but no response from the umpire. 1 run added to the total. Leg by is the signal. So 4 runs of the first 3 balls of this over. Anything under 8 would be good enough for the bowling team. This time, fly delivery. He struck the ball hard. The non-striking batsman had to save himself. He did well, but only 1 run added to the total. So 5 runs of the first 4 balls. 5th ball of the over this time. Flighted delivery, it's straight towards the long off fielder, but the ball won't carry. The batsman had enough time to run to, and now what sneaky batting! Brilliant running. There was just 1 run and they ran 3 runs out of it. Brilliant running. They run the last run off the loose throw. Brilliant awareness of the game. And they ran 3 runs in a space where there was only 1 run available. Brilliant batting. So last ball this time, flighted delivery. The batsman used his feet and hit it towards the long off region. This time they just ran 1 run. So end of the over number 17, 144 for 3. Nine runs came off the last over. So last 3 overs of the innings, 144 for 3, Denim. Kashif Sajjad batting on 8. Adnan is faced 12 deliveries and scored 10 runs. Both the batsmen are yet to score a boundary, but that could change very quickly as we're into the last 3 overs of the innings. 144 for 3. बोर्ड पे गलत लगाया था 31 के बाद 16 आया था. अख्तर हुसैन खेले इंसान कौन अख्तर. So Akhtar Hussain will continue from the pavilion end. His last over for the day. He's given away 24 runs so far. Left arm over the wicket. This time the ball was bowled outside off stump. The batsman wanted to heave it over mid-wicket. Failed to connect.
More importantly, a dot ball for Factdate. They've pulled the game back brilliantly in the last few overs, managed to get wickets, stopped the boundaries this time, went on the back foot and hit it in the gap. Finally, a welcome boundary for Denim Craft, first boundary for Adnan. And can this break the shackles for Denim Craft, who have failed to find the boundaries in the past few overs? But now we're into the last 3 overs, so a boundary of the second ball of the over. Adnan batting on 14 now. He batted brilliantly yesterday as well. So he can strike the ball cleanly. We've seen that in the previous game. This time only 1 run added towards the long off region. 149 for 3 balls remaining in the 18th over. Akhtar would like to finish the over well. Given away 5 runs of the first 3 balls. This time a quicker delivery on the pads. The batsman guided it towards the long on region. 1 run added to the total. 150 up for Denim Craft in the 18th over. 2 balls remaining in the over. 6 runs of the first 4 balls so far. Can Adnan find another boundary? That is the big question. This time quicker delivery, used his feet and well fielded by the long off fielder. Enough time to add 2 runs to the total. He timed the ball well, but the long off fielder did well. He covered around 15 yards to field the ball. 2 runs added to the total. Adnan must be eyeing the boundary. He makes room this time. Connects but straight to the long on fielder. Only 1 run added to the total. So end of over number 18. 153. So 9 runs of the last over. 9 runs of the 17th over. So they've scored 18 runs in the last 2 overs. How much can they score in the last remaining 2 overs? Score बताएगा? उनको बता दिया. वापस बताएं, पूछ रहे हैं. 153. Idealistically, they'll be aiming anything close to 180. Anything between 175, 180 would be good enough. But looking at the start Denim Craft got, they must be feeling guilty for not scoring quickly in the past few overs. They got a brilliant start. They got off to a flyer courtesy Agha Sabir half century. Ahmed Zishan looked brilliant when he came to the crease, but credit goes to Factdate Engineering, who pulled the game back. Especially Rizwan Qureshi is bowled brilliantly. He's given away only 14 runs in his 3 overs and picked up 2 wickets. 2 important wickets to break the momentum of Denim Craft. Can he finish well? So Denim Craft would be eyeing a 10 to 12 run over. Adnan is on the crease. We've seen that he can strike the ball big. He's a clean striker. But can he find a boundary or 2 in this over? This time a flighted delivery. He used his feet, but the balls went straight to the long on fielder. 1 run added to the total. It was a low full toss. He could have aimed for some vacant area, but hit straight to the fielder. Second ball of the over this time. Another flight delivery, and this ball has went long up in the air, but found no timing. It was lobbed straight to the long off fielder. For a moment, it felt that it will cross the boundary, but went straight to the long off fielder. So the loss of 4th wicket for Denim Craft, 3rd wicket for Rizwan.
This was exactly what I was talking about a while earlier. A T20 game can change very quickly. The batting team were batting at 10 run and over. They were aiming for 200, and suddenly 170 seems like a question mark. Denim lost their first wicket on the last ball of the 10th over, and since then they've lost momentum. Ever since Agha Sabir got dismissed, he was dismissed in the 13th over when Denim were 121 on the board, and they've managed to score only 33 runs in the last 6 overs. Looking at the start they got, must be feeling guilty here for losing momentum, losing quick wickets, but credit goes to Rizwan Qureshi, who have bowled brilliantly. Even Zulfikar Lahiri bowled well. He's given away 19 runs in his 3 overs. But Rizwan Qureshi has conceded only 15 runs and picked up 3 wickets, and he still has 4 balls remaining. Can he finish well? Can he manage to pick up 1 more wicket in his last 4 balls? Or can Adnan find the boundary and middle one for 6? That is the big question. 10 balls remaining in the first innings. Denim 154 for 4. Rizwan Qureshi all set for his next ball. Some changes in the field. This time the batsman used his feet again, guide the ball towards the deep long off, wider long off region, but only 1 run managed. So the new batsman is Asif Sheikh. Three balls remaining in the 19th over, 155 for 4. This time a loopy delivery and hit straight to the deep mid wicket fielder. Only 1 run added. So brilliant bowling. Brilliant bowling. This is the 19th over and has given away only 3 runs so far and picked up a wicket. What a wonderful piece of bowling by Rizwan. This time another flighted delivery and hit. This time the batsman manages to find the gap. He beat the long on fielder to get his second boundary. And this is the first boundary conceded by Rizwan Qureshi in a spell of 4 overs. He just has 1 ball to bowl. If he can finish well, it will be a wonderful spell nonetheless. Last ball of the 19th over, this time a quicker delivery. Hit over the head of the bowler. Trying to come back for the second run, but couldn't manage to get into the crease on time. So Asif Sheikh is run out. He just faced 1 delivery and sacrificed his wicket for the team. Adnan is still on the crease. He's batting on 25. If he can get majority of the strike in the last over, Denim can still manage 10 to 15 runs in the last over. 161 for 5. They were 120 in 12 overs. And they've managed only 41 runs in the last 7 overs. 61.
बैट्समैन है मोहम्मद अली. Mohammad Ali is the new batter. 6 balls remaining in the first innings of Denim Craft. We have to give credit to Factdate who pulled this game back brilliantly Bowling change Zulfikar Lehri. after conceding 96 runs for the first wicket. Ever since Rizwan Qureshi has came into ball, it looks a different game. When Agha Sabir was batting, it seemed like 200 is on the cards. But ever since Agha Sabir is dismissed, Denim Craft has struggled. They've lost their last 4 wickets for just 40 runs in the last 7 overs. And they're 161 for 5, 6 balls remaining. Ali is the new batter who is on strike. There's a change in bowling. Zulfikar Lehri will bowl the last over. He's bowled economically so far. He's given away only 19 runs in his previous 3 overs. Now, first ball of the last over. Zulfikar Lehri. Right arm, China leg spin. All right, that's a hit. Finally got some gap. When he struck the ball, it seemed like the fielder will manage to save it. But he was able to find the gap. The fielder could have moved a bit more swiftly. But more importantly, 4 runs on the first ball. Right arm leg spin over the wicket. Zulfikar Lehri. This time wider delivery outside off stump. Batsman could not find the gap or timing on this one. 1 run added to total, and now Adnan will be on strike. 4 balls remaining. We've seen that he can hit the ball clean. He has the capability to find the boundary. We saw him hit 2 consecutive sixes yesterday. Can he repeat the same today? 166 Denim Craft. Can they manage 175 from here? Last 4 balls of the innings. This time a shorter delivery. He wanted to hit the ball out of the ground, but the ball kept low, missed it completely. More importantly, a dot ball for Zulfikar Lehri and Factdate. So the 4th ball of this last over and innings of Denim Craft. 166 for 5. This time the ball was pitched outside leg stump. No real damage done, only 1 run added. So brilliant comeback by Zulfikar Lehri. Is given away only 2 runs for the last 3 balls after conceding a boundary on the first ball. A good comeback. 2 balls remaining. He's given away 6 runs so far. 5th ball of the over. This time the batsman used his feet and the ball was running towards the boundary, but the fielder managed to stop it and restrict the batting team to 2 runs. So 169 for 5, last ball of the over. 8 runs conceded of the over so far. This time a juicy full toss. It was a gift, and gift well received by Mohammad Ali. So they managed to get a boundary on the last ball. 173 for 5 after 20 overs. Denim Craft must be feeling that they're 15 to 20 runs short after the brilliant start Agha Sabir and Rizwan gave them. 173 for 5, Agha Sabir scoring 54 of 39, Rizwan getting 36 of 27, while Mohammad Ali managed to score 11 runs of just 4 balls. A cameo in the end, got 2 boundaries in the last over. Whereas if we talk about the bowling, Raut Tahir gave away 17 runs in the only over he bowled. Fahad Anjum conceded 23 runs in his 2 overs.
Ubaidullah gave away 16 runs in his 2 overs. Akhtar Hussain made a good comeback after conceding his first over for 14. He ended up with 33 runs in his 4 overs. Zulfikar Leri was a bit expensive in the last over, gave away 12 runs to slightly damage his figures. He gave away 31 runs in his 4 overs. Khurram Baloch bowled well, picked up a wicket and conceded 23 runs in his 3 overs. While Rizwan Qureshi was the pick of the bowlers, gave away only 22 runs and picked up 3 wickets. So the difference we see in the Denim Craft total is because of Rizwan Qureshi's brilliant spell of bowling. So we'll be back after the innings break. Mr. Mirza Kamabeg will continue after the break. See you shortly. नया बॉल भी निकाल देंगे, नया बॉल भी निकाल।
बोलिए। आसिफ शेख फेस का है। अस्सलाम वालेकुम। अरे बोलिए भाई, कहाँ कहाँ सभी नाम करे थे तो अल्लाह का शुक्र। कहाँ नहीं है कौन है? कस्टम पास कब से गई जला तुम तो वो रह गए। तो जाने वाली जीप चली गई। अभी राशिद इसको रोक सकते हैं? जो चला गया क्या कर सकते हैं? फादर ने फेस कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 35वां कराची जिमखाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल का ये मैच नंबर 5 है जो खेला जा रहा है। हमारे लिए तो भाई सब ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आसिफ शेख आ गया ना। आतिफ शेख जिन्होंने गेंदबाजी का आगाज़ किया है, उनकी दूसरी गेंद पे कट किया है और कट करते ही रन के लिए दौड़ पड़े। एम्पायर का इशारा 4 रन। एक 174 रन का पीछा कर रहे हैं फैक्टडेट इंजीनियरिंग के बल्लेबाज। सलमान हैं ये बल्लेबाज जिन्होंने अभी अभी ये 4 रन खेले हैं बाउंड्री की तरफ। उनका साथ देने आए हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पे फहाद अंजुम। गेंदबाजी की शुरुआत की है आसिफ शेख दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, कट किया उसे। गली पॉइंट की जानिब रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। एक और डॉट बॉल वहाँ आसिफ शेख की जानिब से। इनिंग की शुरुआत की हैं सलमान और फहाद अंजुम ने और अब तक 3 गेंदों का खेल हो चुका है। 5 रन स्कोर पे सजे हुए और ये बहुत अच्छी गेंद नीचे रही। खेलना चाहते थे, चूके पूरी तरीके से और एक उम्मीद और आस के साथ एम्पायर और की तरफ गेंदबाज और विकेटकीपर ने इल्तिजा ज़रूर की थी, लेकिन गेंद लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी। आसिफ शेख फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट हमारी तरफ आते हुए फार एंड की जानिब से गेंद करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज को इस बारी गेंद कट करना चाहते थे, चूके गेंद से गेंद गई विकेट कीपर के लिए। पहले ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। पहले ओवर के इख्तिताम पर 5 रन फैक्टडेट 174 रन का पीछा करते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में। ये मैच नंबर 5 है जो खेला जा रहा है 35वां कराची जिमखाना उमर एसोसिएट रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का। आज का मैच खेला जा रहा है फैक्टडेट और डेनम क्राफ्ट के बीच। फैक्टडेट टॉस जीतकर जिन्होंने फील्डिंग का फैसला किया था,
डेनिम क्राफ्ट ने 173 रन के स्कोर सजाया था और उसे 174 रन का हदफ दिया है बल्लेबाजों को। फैक्टडेट के बल्लेबाज सलमान और फहाद अंजुम, और यहाँ क्या नाम है फहाद बॉलर बॉलर तो आसिम लाया, बैटिंग में कर रहा है। अच्छा मतलब आसिम जा जान आसिम जा जी। यहाँ कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे आसिफ जा दाहिने हाथ के गेंदबाज। राउंड आर्म एक्शन है आसिफ जा का। उनकी पहली गेंद को खेला है ऑन साइड पे फहाद अंजुम ने 1 रन के लिए। फहाद अंजुम जो कि 34वां कराची जिमखाना टूर्नामेंट हुआ था उसमें ई टाउन की कप्तानी कर चुके हैं। फहाद अंजुम जाना माना नाम है फहाद अंजुम। और इस बार इस गेंद को फिर से ड्राइव किया है ऑन साइड पे 1 रन के लिए आसानी के साथ। सलमान खेल रहे हैं 5 रन पर 6 गेंदों का सामना किया है 1 चौके के साथ। आसिम जा फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। और इस बार गेंद अच्छी गेंद फ्रूटर गेंद बाहर निकलती हुई इस गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद की लाइन को पूरी तरीके से मिस किया, चूके पूरी तरीके से। गेंद गई विकेट कीपर के पास, रन लेने का कोई मौका नहीं। आसिफ जा फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। और इस बार गेंद अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई इस गेंद को धीरे से खेला है ऑन साइड पे तब तक कि फील्डर आके फील्ड करे। रन लेने का कोई मौका नहीं था बल्लेबाजों के लिए। जो ही फील्डर को गेंद पे झपटते देखा अपना कदम वापस क्रीज पे खींच लिए दोनों बल्लेबाजों ने और रन लेने की हिम्मत ना दिखा पाए। आसिफ जा की गेंद फिर से अच्छी गेंद और इसको बैट और पैड साथ मिलाते हुए इज्जत के साथ खेला है पॉइंट की जानिब जहां फील्डर मौजूद। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। आसिफ जा फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। आसिफ जा और ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद के स्पिन के साथ ही खेल दिया है डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। फहाद अंजुम थे ये बल्लेबाज। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 11 रन बगैर कोई विकेट खोए। फैक्टडेट इंजीनियरिंग टॉस जीतकर 174 रन का पीछा करते हुए और वहां गेंदबाजी की जिम्मेदारियां फिर से आसिफ शेख के हाथों में। आसिफ शेख के लिए फील्डिंग की सजावट 4 खिलाड़ी। तीन खिलाड़ी ऑन साइड पे, 6 ऑफ साइड पे। और इस बार ये आउट। आसिम जा हैं जिन्होंने कैच किया है। ये अच्छी फील्डिंग वहां आसिम जा की। और मायूसी के साथ सलमान आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं। बंद करवाया। अच्छा इसी ठंडा हो रहा है।
शुरुआत में ही पहला झटका कहना पड़ेगा यहाँ फैक्टडेट इंजीनियरिंग के बल्लेबाजों के लिए, जबकि उनके सलामी रूप के बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं। सलमान है ये बल्लेबाज जो कि आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं। चला दिया 15-20 मिनट बाद, तो ठंडा हो गया था। खानी ठंड लग रही है, सही नहीं है। सर में खाली पेट होते हैं, ज़्यादा सर्दी लगती है। कोई बस में गजनफर खान नए जाने वाले बल्लेबाज गजनफर खान। अभी बाहर गर्मी कम है ना, इसकी वजह से धूप भी कम है। आसिफ शेख तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे नए जाने वाले बल्लेबाज गजनफर खान को। और ड्राइव किया है गजनफर खान ने ऑन साइड पे, तब तक ऑन साइड पे फील्डर फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, और से 1 रन से अपना खाता खोला यहाँ गजनफर खान ने। फहद अंजुम खेल रहे हैं 6 रन पर 6 गेंदों का सामना किया है 1 चौके के साथ, और मौजूदा रन औसत जो है वो 5.14 है। रिक्वायर औसत जो है वो 9.17 है। गेंद ऑफ स्टंप पे और पिच गेंद थी, धीरे से टर्न गाइड किया है उसे गली पॉइंट की जानिब। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। आसिफ शेख फिर से तैयार, और इस बार खेल दिया है उसे लेग स्टंप पे पड़ी इस गेंद को। देखना पड़ेगा एम्पायर का इशारा। 4 रन डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। फहद अंजुम थे ये बल्लेबाज जिन्होंने 4 रन का रास्ता दिखाया है। फहद अंजुम पहुंचे 10 रन पर 8 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके लगाए हैं फहद अंजुम ने। फहद अंजुम जो कि इनिंग का आगाज करने आए थे और कप्तान भी हैं। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी। गेंद को बगैर लाइन में आए खेलना चाहते थे। गेंद चूके गेंद गई विकेट कीपर के पास। आसिफ शेख फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर हमारी तरफ आते हुए दाहिने हाथ से, और ये गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ी। इस गेंद को फिर से लिया है, पिक किया है डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गैप में खेला गया है शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर रशीद का इशारा। 4 रन, और इसी के साथ तीसरे ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर 20 रन 1 विकेट खोकर फैक्टडेट 3 ओवर सॉरी। और यहाँ कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी है फिर से कप्तान आसिम जा। और अब मौसम कुछ खुशगवार हुआ है यहाँ कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर। सूरज की वो तमाज़ा जो तेज़ी थी कब हुई है। इंतहाई खुशगवार मौसम कहेंगे क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से।
लेकिन जो रोज़दार हैं उनके लिए वाकई हिम्मत की बात है। इस बार सूरज बादलों की ओट से बाहर, आसिम जा अपनी फील्डिंग की सजावट के साथ गेंद करेंगे दाहिने हाथ से। दाहिने हाथ के बल्लेबाज को इस बार लेग स्टंप पे पड़ी इस गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद की लाइन से चूक के लो ट्रेजेक्टरी की गेंद थी, बल्ला ऊपर से घुमा दिया, गेंद लगी पैड पे। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 ऑन साइड पे। आसिफ जा गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को, और ये गेंद मिडिल एंड ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की जानिब, जहां फील्डर मौजूद। फ़हीम सीनियर थे ये फील्डर, फील्ड करके थ्रो करते। बल्लेबाजों ने अपने कदम क्रीज में खींचे, जो ही फ़हीम को झपटते देखा गेंद पर। आसिम जा तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे गजनफर खान को, और इस बार फ्लाइटेड गेंद थी। देखना पड़ेगा अगले कदमों का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरीके से खेलें। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एम्पायर वसीमुद्दीन के दोनों हाथ फजा में बुलंद हुए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद यहाँ गवर्नर हाउस में आती हुई 6 रनों के लिए, और वसीमुद्दीन ने इशारा किया है बॉल का, क्योंकि ये बॉल गवर्नर हाउस में जाके गिरी है। लंबा छक्का था ये गजनफर खान की जानिब से। यूं ही गेंद को फ्लाइटेड गिरते देखा, अपने कदमों का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, क्रीज से बाहर आए, खेल दिया है उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। बड़ा हिम्मत वाला शॉट, ताकत वाला शॉट, वो बल्ले का कूदा जो बीच का होता है वो दिखाया है इस बार गजनफर खान ने। आसिफ जा फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। ये गेंद थोड़ी नीची रही, धीमी भी थी, उसको टर्न किया है ऑन साइड पे। मिड ऑन की जानिब फील्डर मौजूद, रन लेने मिड विकेट की जानिब फील्डर थे। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए, और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेलें ऑन साइड पे डी मिड ऑन की जानिब, तब तक कि फील्डर आके उसे फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, और 1 रन साझी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ 27 रन 1 विकेट खोकर 3.5 ओवर अब तक हो चुके हैं। आसिफ जा गेंद करेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। दाहिने हाथ के बल्लेबाज को फवाद अंजुम है, ये इस बार बैकफुट पर गए, खेला उसे ऑफ साइड पे मिड ऑफ की जानिब, तब तक कि फील्डर फील्ड करते। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, और हम यहाँ खुश आमदीद कहते हैं जॉगिंग ट्रैक पे जनाब जाम नफीस साहब को। सेक्रेटरी जिम खाना है और बड़ी काविशें हैं जाम साहब की मैच को ऑर्गेनाइज करने में। सूरज फिर से बादलों की ओर से बाहर, और यहाँ 4 ओवर 28 खासा खुशगवार मौसम है। सुबह जो गर्मी नज़र आ रही थी खासी हद तक कम हुई है, और ये उन खिलाड़ियों के लिए जो रोज़े में खेल रहे हैं एक तस्कीन का बाइस है। पैंतीसवां कराची जिम खाना उमर एसोसिएट रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये मैच खेला जा रहा है। ये मैच नंबर 5 है जो खेला जा रहा है फैक्टडेट और डेनिम क्राफ्ट के बीच। फैक्टडेट जो टॉस जीते थे पहले फील्डिंग की थी, अब बल्लेबाजी में 174 रन का पीछा कर रहे हैं। उस और अब तक 28 रन बना चुके हैं। 4 ओवर का खेल हो चुका है। रन औसत है 7.00।
आसिफ शेख ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद की लाइन से दूर हुए गेंद गई विकेट के ऊपर के पास। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। आसिफ शेख फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज फहद अंजुम को। और ये गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई उस गेंद को धीरे से खेला, पुश करते ही मिड ऑफ की जानिब रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। अच्छे तालमेल का रन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। जूही फील्डर को थोड़ा सा सुस्त देखा, ये रन तेजी के साथ चुराया है दोनों बल्लेबाजों ने। और इस एक रन के साथ 29 रन, एक विकेट खोकर फैक्टडेट 174 रन का पीछा करते हुए आसिफ शेख फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे गजनफर खान को। और ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, खेल दिया है, ड्राइव कर दिया है उसे। अगले कदम पे देखना पड़ेगा, तब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर जाके उसे फील्ड करते। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहाँ लॉन्ग ऑन के फील्डर ने लगभग मिड ऑन की तरफ भागते हुए गेंद को लपका, लेकिन इस बीच 2 रन आसानी के साथ पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। इन 2 रनों के साथ 31 रन, एक विकेट खोकर फैक्टडेट। आसिफ शेख फिर से तैयार हमारी तरफ आते हुए, इस बार उठता हुआ शॉट लेकिन महफूज कट किया है बैकफुट पर। गली पॉइंट के ऊपर से फील्डर हसरत भरी निगाहों से देखते ही रहे। गेंद एक टप्पा खाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ 35 रन। रन औसत 7.50 है और रिक्वायर औसत जो है वो 9.07। लेकिन टाइम लग जाता है ना, निकलते निकलते 6:30 हो जाते हैं। आसिफ की अगली गेंद ड्राइव किया है, उसे ऑन साइड पे देखना पड़ेगा। तब तक के मिड ऑन पे फील्डर जाके फील्ड करें। 1 रन पूरा किया, जो तब तक के थ्रो आती। दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इन 2 रनों के साथ 37 रन, एक विकेट खोकर फैक्टडेट आसिफ शेख गेंद करेंगे गजनफर को। और इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को गजनफर ने खेलना चाहते थे ऑफ साइड पे। गेंद ने बल्ले का निचला किनारा लिया और सीधी गई ऑन साइड पे। 38 वहाँ रन मौजूद था बल्लेबाजों के लिए। और 1 रन के साथ 38 रन, फैक्टडेट 174 रन का पीछा करते हुए और यहाँ देखना पड़ेगा गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहाँ फ़हीम बुखारी आए हैं, बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज। कमेंट्री बॉक्स की ओर से फ़हीम बुखारी भी पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट का एक नाम है। फ़हीम बुखारी अपनी फील्डिंग की सजावट में गालिबन 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे और 4 ऑन साइड पे। फ़हीम बुखारी इसी फील्डिंग की सजावट के साथ बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेन करेंगे, अराउंड द विकेट गेन करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज फ़हीम बुखारी को गेन करेंगे गजनफर को। और इस बार पहली गेंद को हवा में खेला है। गेंद एक टप्पा खाने के बाद डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा। पहले ही गेंद का इस्तकबाल किया है फ़हीम की 4 रन से गजनफर ने।
फ़हीम फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। गजनफर को इस बार बैकफुट पर गजनफर खूबसूरती के साथ खेला है डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। जो ही गेंद को थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेन गिरते देखा, अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेल दिया है उसे खूबसूरती के साथ। कवर और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बीचों बीच कारपेट के सहारे 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 46 रन, 1 विकेट खोकर फैक्टडेट गजनफर खेल रहे हैं 25 रन पर 12 गेंदों का सामना किया है। अच्छी बारी ले रहे हैं गजनफर। और दूसरे विकेट की साझेदारी अब तक 35 रन की हो चुकी है 19 गेंदों पर। फहद अंजुम खेल रहे हैं जो सलामी रूप में आए थे। 16 रन पर 13 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके लगाए हैं, जबकि गजनफर जो कि 1 डाउन आए थे 25 रन बना चुके हैं। अच्छी जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है गजनफर ने। 25 रन बनाए हैं 12 गेंदों पर, 3 चौके और 1 छक्का लगाया है। फ़हीम बुखारी फिर से तैयार, बाइने हाथ से रॉन्ग विकेट गेन करेंगे और इस बार इसको लिया है, मिडिल स्टंप से उठाया है बल्लेबाज ने, बहुत ही शानदार। और ये चौकों की हैट्रिक यहाँ पर की है गजनफर ने, आते ही इस्तकबाल किया है फ़हीम बुखारी का धुआंधार बल्लेबाजी से। मुसलसल 3 चौके लगाए हैं और तीनों चौके मुख्तलिफ जगहों पे लगाए हैं। पहला चौका लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया, दूसरा कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच, और इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। वहाँ फील्डर के लिए इस बार भी कोई मौका नहीं था। 3 गेंदों पे मुसलसल 3 चौके लगाए हैं। फ़हीम का इस्तकबाल किया है 3 चौकों के साथ, हैट्रिक, चौकों की हैट्रिक के साथ गजनफर खान ने। और गजनफर खान पहुंचे 29 रन पर 13 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 1 छक्के के साथ। खासी जारहाना बारी ले रहे हैं गजनफर, और अब जो मौजूदा रन औसत है वो 9.09 और रिक्वायर औसत जो है वो 8.55। और ये दूसरे विकेट की साझेदारी 39 रन की हो चुकी है सिर्फ 20 गेंदों पे। गजनफर का स्ट्राइक रेट जो है वो 223 है, बहुत ही एक आइडियल स्ट्राइक रेट 20-20 का। और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेले हैं, देखना पड़ेगा। यहाँ लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने बहुत ही तेजी के साथ आते हुए 4 रन बचाए हैं। ये अपनी 3 रन बचाए हैं, 1 रन बनाया है दौड़ के बल्लेबाजों ने। ये भी करीब करीब था मामला बाउंड्री का, लेकिन वहाँ फील्डर की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से स्प्रिट लगाई है फील्डर ने, दौड़ लगाई है। और इस बार फ़हीम की गेंद, अच्छी गेंद, लो ट्रेजेक्टरी के साथ गेंद की गई थी, इसको चूके गेंद गई विकेट कीपर के पास। फ़हीम सीनियर ने कमबैक किया है 4 गेंदों के बाद। फ़हीम की गेंद इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, लेकिन इस बार उतने ही कमान के साथ ड्राइव कर गया है, ऑन ड्राइव लॉन्ग ऑन की जानिब, तब तक कि फील्डर आके फील्ड करे। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, और इस 1 रन के साथ 6ठे ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 6ठे ओवर के इख्तिताम पर 52 रन और सर्किल खासा अच्छा खेला है फैक्टडेट के बल्लेबाजों ने, वो कि 1 विकेट ज़रूर गंवाई है, लेकिन दूसरे विकेट की साझेदारी में एक अच्छी शराकत कहना पड़ेगा। 41 रन की 23 गेंदों पे। और वहाँ फार एंड की ओर से गेंदबाजी में तब्दीली, मोहम्मद अली आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने। मोहम्मद अली भी बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। मौजूदा रन औसत 8.67। गजनफर जो कि 1 डाउन आए थे खेलने, अच्छी साझेदारी लगाई है फहद अंजुम के साथ। और इस शराकत में सिर्फ
41 रन की शराकत में गजनफर के 30 रन है। 14 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से मोहम्मद अली बाएं हाथ से फॉरन की ओर से एम्पायर और विकेटों के दरमियान राउंड द विकेट गेन करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को, और इस बार कट किया है बैकफुट पर जाते हुए। डीप कवर और एक्स्ट्रा कवर की जानिब 1 रन के लिए गजनफर सामना करेंगे अली का, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे। एम्पायर का इशारा, एम्पायर रशीद खान का इशारा वाइड बॉल का। ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जा रही थी। गेंद का पीछा जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के पास, लेकिन एक वाइड का रन लेने से नहीं रोक पाए गेंदबाज। वो आपकी बात सही है, आप एलईडी लो या एलसीडी लो या और इस बार उल्टे बल्ले से खेला है, देखना पड़ेगा किसी फील्डर के लिए वहां कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर डीप वो इसकी इरेज पे गली पॉइंट की जानिब 4 रनों के लिए। एलसीडी पे आ जाती है। गजनफर खान है ये बल्लेबाज जो कि जहराना रूप धारे हुए हैं। इस बार उन्होंने हालांकि 2 गेंदों पे कोई खासी कामयाबी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने, वो कहते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला टेढ़ी से निकालना चाहिए, वही यहाँ किया। गजनफर ने 4 रन के लिए, और इस बीच 1 रन आसानी के साथ पूरा किया है गजनफर ने। इस 1 रन के साथ गजनफर पहुंचे 35 रन पर। 59 रन 1 विकेट खोकर फैक्टडेट। गजनफर 35 रन 16 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 1 छक्के की मदद से गजनफर, और इस बीच बैकफुट पर जाके खेले हैं डीप लॉन्ग ऑन की जानिब। तब तक के फील्डर आके फील्ड कर रहे हैं, मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। फहद अंजुम पहुंचे 19 रन पर, जो कि दूसरे एंड पे खामोश इनिंग खेल रहे हैं, लेकिन सहारा बने हुए हैं अपने बल्लेबाजों के लिए। फहद अंजुम सामना करेंगे अली का, और इस बार स्वीप करना चाहते थे, गेंद से चूके। गेंद वही गई स्लिम डाउन की जानिब, जहां विकेट कीपर ने पीछे से आके उसे गैदर किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। अच्छी गेंद थी ये, अली की किफ़ायती गेंदबाजी की है अब तक। अली ने सिर्फ 8 रन दिए हैं 5 गेंदों पे, 1 चौका जो उन्होंने लगाया था। सिवाय उसके 1-1 2-2 रन ही लिए हैं, और ये इसके साथ 51 रन की साझेदारी भी हो गई। 29 गेंदों पर 51 रन की साझेदारी, अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। गजनफर और फहद अंजुम के बीच, जिसमें से गजनफर का हिस्सा 37 रन का है 51 रन में। 7वें ओवर के इख्तिताम पर 62 रन 62। मौजूदा रन औसत 8.86। अब जो दरकार औसत है वो 8.6। यहाँ फ़हीम बुखारी अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। पहला ओवर खासा महंगा था, फ़हीम बुखारी का 14 रन बने थे। देखना पड़ेगा फ़हीम बुखारी अपना दूसरा ओवर किस तरीके से संभालते हैं, किस तरीके से बल्ले पे ताला लगाते हैं बल्लेबाजों के। गजनफर जो कि खासे जहराना मूड में नज़र आ रहे हैं। फ़हीम बुखारी की पहली गेंद लेग ब्रेक गेंद, मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ जाती हुई उस गेंद को धीरे से स्पिन के साथ ही खेले हैं पॉइंट की जानिब। फील्डर के हाथों में रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। फ़हीम बुखारी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज फहद अंजुम को 4-5 खिलाड़ी 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे और 3 ऑन साइड पे। इस बीच फ़हीम बुखारी की इस गेंद को डीप कवर पे खेलते हुए 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने।
फ़हीम बुखारी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। छह खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। फ़हीम बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेन करेंगे। इस बार उठता हुआ शॉट है, देखना पड़ेगा फील्डर गेंद के नीचे है, और ये आगा साबिर हैं ये जिन्होंने ये कैच ड्रॉप किया है। खासी एफर्ट तो की थी लेकिन हाथों में था गेंद। ये जिंदगी मिली है यहाँ फहद अंजुम को, गजनफर को। शुक्रिया राशिद, गजनफर थे ये जो बल्लेबाज। और ये बड़ी गलती है फील्डर की, जिस तरीके से एक बैट्समैन जो कि जहाराना रूप धारा हुआ हो और अपनी उसको इस तरह से मौका देना, उसको ज़िंदगी देना, ये ख़तरे वाली बात ज़रूर है। गजनफर खेल रहे हैं 38 रन पर। बहरहाल फ़हीम सीनियर ने अपना काम कर दिया था लेकिन करीब करीब थे, फील्डर ने उनका साथ नहीं दिया। और इस बार खेला है स्क्वायर लेग पे। गजनफर ने 1 रन के लिए गजनफर पहुंचे 39 रन पर 20 गेंदों का सामना करते हुए, 5 चौके और 1 छक्का लगा के। फहद अंजुम खेल रहे हैं 21 रन पर 20 गेंदों का सामना किया है। और ये दूसरा ओवर खासा किफ़ायती ओवर है फ़हीम बुखारी का। अब तक सिर्फ 4 रन दिए हैं फ़हीम बुखारी ने 5 गेंदों पर, और एक मौका भी निकाला था अपने टीम के लिए लेकिन वहाँ फील्डर ने उनका साथ नहीं दिया। और इस बीच लॉन्ग ऑफ पर ड्राइव करते हुए 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और यह ओवर खासा किफ़ायती किया है फ़हीम सीनियर ने। सिर्फ 5 रन दिए हैं इस ओवर में, और एक मौके जैसी बात भी पैदा की थी वहाँ अपनी टीम के लिए, लेकिन वहाँ फील्डर ने ने उनका साथ नहीं दिया। और इसी के साथ 8वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 8वें ओवर के इख्तिताम पर 67 रन 67, कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर, विनिंग द टॉस एंड चेजिंग द टारगेट 174। गेंदबाजी में जो अब तक अली ने अपना पहला ओवर किया था फॉरन की ओर से 10 रन दिए थे। फ़हीम बुखारी ने 2 ओवर में 19 रन दिए हैं। पहले ओवर में फ़हीम बुखारी ने 14 रन दिए थे लेकिन दूसरे ओवर में कमबैक किया फ़हीम बुखारी ने। उनकी एक गेंद पे गजनफर को एक ज़िंदगी भी मिली। और गालिबन ये रोज़े की हालत में विकेट कीपर को थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया है। अहमद ज़ीशान है ये विकेट के पीछे जो कि खासे मौजूदा रन औसत 8.38 और जो औसत दरकार है वो 8.92। अब तक खासी कमान और खासी ग्रिप हासिल की हुई है फैक्टडेट के बल्लेबाजों ने। 1 विकेट गिरने के बाद ये अच्छी साझेदारी है, 56 रन की साझेदारी कहना पड़ेगी। अली की गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती उस गेंद को एम्पायर रशीद का इशारा। वाइट बॉल का और एक और रन वाइट के रूप में। और इस बार फिर से ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को खेला है, उठता हुआ शॉट है लेकिन महफूज तब तक कि डीप मिड ऑफ पे जाके फील्डर फील्ड कर रहे हैं। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का और तब तक कि थ्रो आती है। दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। फहद अंजुम थे ये बल्लेबाज
जो कि सलामी रूप में आए थे, अब तक क्रीज पर मौजूद और अच्छी साझेदारी दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। दूसरी विकेट की 59 रन बना चुके हैं दूसरी विकेट की साझेदारी में दोनों बल्लेबाज, जिसमें से बड़ा किरदार गजनफर का है। उस बार गजनफर ने खेला है ऑन साइड पे, देखना पड़ेगा फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद डीप मिड ऑन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों के साथ फहद अंजुम पहुंचे 28 रन पर। मोहम्मद अली फिर से तैयार, अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे फहद अंजुम को। फहद अंजुम जो कि 121 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि गजनफर खान जो कि 195 के स्ट्राइक रेट से बारी ले रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर। फहद अंजुम सामना करेंगे अली का। और इस बार कट किया, उठता हुआ शॉट था लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर, टप्पा खाने के बाद गेंद गई डीप पॉइंट की जानिब। तब तक के डीप पॉइंट से फील्डर आके फील्ड करते, मौका था बल्लेबाजों के लिए 2 रन का, और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए फहद अंजुम ने। और इसी के साथ फहद अंजुम पहुंचे 30 रन पर 24 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों की मदद से। अली बाहिने हाथ से राउंड द विकेट, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। इस बार एक डॉट बॉल वहां अली की जानिब से। अली फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को छेड़ना चाहते थे। गेंद गई विकेट कीपर के पास, वहां एम्पायर रशीद खान का इशारा वाइड बॉल का, और एक और रन यहाँ वाइड के रूप में। और इस बार कट किया है, खेलते ही दौड़ना चाहते थे लेकिन जो ही फील्डर को गेंद पे झपटते देखा, अपने कदम वापस क्रीज में खींचे बल्लेबाजों ने और रन लेने की हिम्मत ना दिखा पाए। मोहम्मद अली बाहिने हाथ से, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। इसी फील्डिंग की सजावट के साथ अली की ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, उसको धीरे से खेला है स्लिम डाउन की जानिब, जहां मोहम्मद अली ने आके खुद ही फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। और इसी के साथ 9वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 9वें ओवर के इख्तिताम पर 77 रन 77 फहद अंजुम खेल रहे हैं। 30 रन पर 27 गेंदों का सामना किया फहद अंजुम ने, 4 चौके लगाए, जबकि गजनफर खेल रहे हैं 39 रन पर 20 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 1 छक्का लगाया। वहां गेंदबाजी में तब्दीली, फ़हीम बुखारी की जगह आए हैं अजीजुल्लाह गेंदबाजी में। अजीजुल्लाह भी गालिबन बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज। अजीजुल्लाह के लिए फील्डिंग की सजावट, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। ऑन साइड पे डीप स्क्वायर लेग लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप मिड विकेट भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप लॉन्ग ऑन भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, और डीप एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड पे बाउंड्री लाइन के करीब। और इस बार पहली गेंद को पुल किया है गजनफर खान थे ये बल्लेबाज, 2 रनों के लिए, और इन 2 रनों से इस्तकबाल किया है अजीजुल्लाह का। गजनफर पहुंचे 41 रन पर, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया गजनफर ने, ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की जानिब। तब तक के फील्डर आके फील्ड करें, मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। अजीजुल्लाह बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज,
6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑफ साइड पे। इसी फील्डिंग की सजावट के साथ इस बार गेंद में थोड़ी सी तब्दीली की थी, तेज की, उसको पूरी तरीके से भापते हुए खेले 1 रन के लिए डीप कवर की जानब। अजीजुल्लाह फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, गेंद करेंगे अब फाद अंजुम को, गजनफर को, और इस बार ये आउट। अच्छी चालाकी की गेंदबाजी की, जो ही बल्लेबाज को थोड़ा सा क्रीज से बाहर देखा, गेंदबाजी में तब्दीली की, गेंद से पूरी तरीके से चूके बल्लेबाज, जहां विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। और इसी के साथ एक बड़ा झटका कहना पड़ेगा यहाँ फैक्टडेट के लिए, जबकि उनके एक अच्छे बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं, जिन्होंने एक बड़ी साझेदारी लगाई थी दूसरी विकेट की। अब 93 रन चाहिए 62 बॉलों पे। गजनफर ने अच्छी बारी खेली है, और अब नए जाने वाले बल्लेबाज कराची, बल्कि पाकिस्तान की घरेलू क्रिकेट का एक जाना माना नाम तारिक हारून क्रीज पर जा रहे हैं। गजनफर खान ने 42 रन बनाए, 23 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 1 छक्का लगाया। वेल प्लेड गजनफर, और अपने बल्लेबाजों को एक इज्जत बख्श मकाम जरूर दे के गए हैं। देखना पड़ेगा अब आने वाले बल्लेबाज इस मकाम को कहां तक महफूज रखते हैं। तारिक हारून पे भी बड़ी जिम्मेदारी है, जबकि सामने फाद अंजुम खेल रहे हैं। 31 रन पर 28 गेंदों का सामना किया है। फाद अंजुम ने 4 चौके लगाए हैं। एक खासी खामोश इनिंग कहना पड़ेगा फाद अंजुम की जानिब से। 20-20 के हिसाब से 110 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, लेकिन अपने बल्लेबाजों को सहारा दिया है ज़रूर। सलामी रूप में आए थे, अब तक क्रीज पर मौजूद हैं फाद अंजुम। बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा फाद अंजुम को अगर ये मैच जीतना है आखिर तक। फरहान हारिफ जिमखाना के कप्तान, अजीजुल्लाह गेंदबाजी जारी रखेंगे पवेलियन की ओर से। सामना करेंगे नए जाने वाले बल्लेबाज तारिक हारून। तारिक हारून के लिए फील्डिंग की सजावट, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे और 3 ऑन साइड पे। एक स्लिप के साथ ये गेंद, पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन में टप्पक आने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को एक उम्मीद के साथ, एक आस के साथ जरूर गेंदबाज ने मचलते हुए अंदाज में वसीमुद्दीन से अपील की थी, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, गालिबन पैड को भी छुई थी, जिसकी वजह से वाइड का भी इशारा नहीं किया एम्पायर ने। और इस बीच 1 रन तारिक हारून ने बनाया और अपना खाता खोला ऑन साइड पे खेलते हुए, और उस 1 रन के साथ 82 रन 2 विकेट खोकर 10वें ओवर के अख्तिताम पर 82 रन। और अब आगे का आंखों देखा हमारे साथी कमेंटेटर उमर खान हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि अंग्रेजी में आप कमेंट्री करेंगे। Thank you, Mr. Mirza Kamar Beg. We're into the later half of this game. 10 overs remaining, midway, 82 for 2. Factdate. Chasing 174. Fahad Anjum batting on 31. Tariq Haroon is the new batter.
Factdate lost their well-set batsman Ghazanfar Khan for 42 in the previous over. He's batting smoothly, scored 42 of 23 balls. The next ball this time around, quick run towards the point region. So 1 run added to the total, 83 for 2. Now we're going towards a very interesting finish of this game as 91 runs are required, 58 balls remaining. Required rate is now going up, and with every economical over, the scoreboard pressure will increase. This time around, right arm over the wicket, flight delivery, a huge appeal, and umpire has signalled wide ball. The wicket keeper can't believe the decision. He seems to be very upset. But 1 run added to the total. Now the new batter, Tariq Haroon, has a very big responsibility as he does not have time to settle in. Required rate is over 9 and they need boundary every over now. And with every dot ball, the required rate will keep climbing up. 1 run added to the total towards the long on region. 86 for 2, we're into the 11th over, required rate now 9.37. And Factdate are currently scoring at 8.10 runs per over. Next ball of the 11th over, this time flight delivery outside off stump and headed towards the deep cover region. 1 run added to the total. For a moment they thought to take the second run, but the fielder was quick on his feet, decided against it. 1 run added, 86 for 2. 2 balls remaining in the 11th over. Fahad Anjum batting on 32. Tariq Haroon has just arrived in the crease. This time another flighted delivery, slower through the air, beat the batsman completely. He wanted to play across the spin. Could have been a better option to wait for the ball and cut it, play with the spin. Last ball of the 11th over. Another flighted loopy delivery this time. And he's gone. For a moment I thought that he's got enough on it. But the longer boundary towards the long on region then had the legs behind the hit. And a well-judged catch towards the long on region. So another wicket on a crucial stage of the game. 86 for 3 after 11 overs. Fahad Anjum, the other settled batsman, is now dismissed. So in a space of 2 overs, Factdate have lost their both set batsmen. First Ghazanfar Khan for 42 and now Fahad Anjum gone for 32. 3 विकेटें 3 विकेटें. And now Rizwan Qureshi is walking in. He did a wonderful job with the ball. Now what can he do with the bat? So far it's been his day. Can he also make an impact with the bat? 88 runs to get, 54 balls remaining. The required rate is almost 10 now, 9.76 to be precise.
First ball of the 12th over. Bowler name. Azizullah bowling his second over. He picked up an important wicket in the previous over. And since then, the momentum has shifted towards the Denim Craft team. Rizwan Qureshi now on strike. We're into the 12th over, 87 for 3. Denim Craft still require 87 more runs of 53 balls. We've seen an equal contest so far. At the same stage, Factdate had crossed the 100-run mark and they lost 1 wicket. Denim, in fact, crossed 100, and Factdate are around 15 runs short to what Denim Craft scored. In addition, they've lost 2 extra wickets as well. But Factdate have the target in front of their eyes. They know how to go by it. But an important partnership this for Factdate. This time a quicker delivery. He tried to hit it with all his force, but couldn't time the ball at all. Barely crossed the circle. Only 1 run added to the total. 89 for 3 Factdate. Only 3 runs of this over so far. They require 10 runs and over from here. 4th ball of the 12th over. This time a quicker delivery pitched on the middle stump. Heaved towards the long leg region. 1 run added to the total. So decent over, keeping in mind the required rate has crossed 10 runs and over. So only 4 runs have been added in the 12th over. They've lost 2 wickets in the span of 2 overs. And not a good time to lose wickets, especially when you're chasing at over 10 run and over. This time a quicker delivery ball onto middle leg. The batsman edged the ball and into the vacant area. There was no field over there, no short fine leg, and 3 runs taken by the batters. Good running. (93 for 3) with 1 ball remaining. 7 runs so far of the 12th over. Azizullah is the bowler. He's given away 12 runs so far and picked up the important wicket of Ghazanfar Khan. Last ball of the 12th over. This time the ball was bowled outside off stump. 1 bounce towards the long on fielder. 1 run added to the total. So 8 runs of the 12th over. 94 for 3 Factdate after 12 overs. 8 overs remaining in the game. And exactly they require 80 runs. So 80 runs required of 8 overs. That is exactly 10 runs and over from here. Currently they're batting at 7.83. So they have got the launching pad. From here on they require 10 runs and over. That means boundary every over. And with every dot ball or a single taken, the required rate will mount up.
Change in bowling. Fahim Bukhari will bowl the next over from the club road end. Crucial period for the game. Still in the balance as 80 runs required of 8 overs with 7 wickets in hand. The advantage goes slightly towards the bowling team as there are 2 new batsmen on the crease. Rizwan Qureshi batting on 3 and Tariq Haroon batting on 8. 94 for 3, Factdate. First ball of the 13th over, Fahim Bukhari will bowl his third over. He's given away 19 runs so far from his previous 2 overs. First ball of the 13th over, this time a flighted delivery on middle stump. Guided towards the long leg region for 1. So singles won't hurt Factdate, Denim Croft right now. As with every single, the required rate will climb up. Here on they require boundary every ball. Every over where they fail to score a boundary, the pressure will mount up. Second ball of the 13th over, Tariq Haroon on strike. This time a quicker delivery outside off stump. The batsman let the ball go. And a crucial dot ball. Only 1 run of the first 2 deliveries. Third ball coming in of the 13th over. This time another quicker delivery and the batsman just guided the ball towards the cover region. 1 more run added to the total. So good start to the over for the bowling team. They have to finish the over well now. Rizwan Qureshi on strike. Time the ball was bowled on the leg stump. Huge appeal with no response from the umpire, but importantly it's a dot ball. So just 2 runs of the first 4 balls. Fifth ball of the over, this time a flighted delivery on the leg stump, ballooned it up over the short fine leg fielder and finds a boundary. Important 4 runs. Important 4 runs. This over was going very well for the bowling team. The bowler had given away only 2 runs of the first 4 balls, but certainly this boundary brings back Factdate into the equation. 6 runs of the first 5 balls, last ball of the over. Big ball coming up. This time flighted delivery and he's middle it over mid wicket for 6. What a hit by Rizwan Qureshi. First with the ball, now with the bat. He's having a wonderful day. 10 runs of the last 2 balls of the over, 12 runs of the 13th over, and Factdate are now 106 for 3, require 68 more runs of the last 7 overs. So the required rate that climbed 10 is now under 10, 9.71 to be precise. And Rizwan Qureshi has got 2 boundaries in the 7 balls they've faced. A 6 and a 4, he's batting on 14. Previously with the ball, he bowled really well. Picked up 3 wickets for 22 runs in the first innings and brought back his team in the game. And now he's turning it around with the bat.
Can he take the game deep? Can he finish it for Factdate? If we look at the bowling options for Denim Craft, Asif Sheikh has got 1 over remaining. Asim Jah has got 2 overs remaining. Fahim Bukhari has got 1 more to bowl. Azizullah has 2 overs up his sleeve. And Ali has 1 over remaining. So the last 7 overs of the innings. Over number 14 begins. Azizullah to continue his 3rd over for the day. First ball guided towards the long leg region. 1 run added to the total. (107 for 3). We're into the 14th over of the innings. 41 balls remaining. 67 runs to get. Second ball of the over is Van Qureshi on strike. He has scored 10 runs of the previous 2 balls he faced. This time shorter delivery outside off stump, appealed by the wicket keeper and bowler, but no response from the umpire. Dot ball. Any over around 6-7 runs would be a gold for the bowling team right now. And sneakily played, cheeky shot, used the pace of the bowler, guided it towards the short 3rd man. There was no fielder behind the keeper or defending one, and picked up 2 important runs. So 3 runs of the first 3 balls of this over. All they need is a boundary in the next 3 balls. Azizullah ready to bowl 4th ball of his over. 109 for 3 Factdate. This time a quicker delivery onto the middle stump. 1 run added to the total. The ball was guided towards the long on region. So 4 runs of the first 4 balls, 2 balls remaining. Now Tariq Harun on strike. He has taken 11 balls to score his 10. He needs to get going. He's eyeing the mid-wicket region. Let's see, can he middle the ball for a boundary or not. This time quicker delivery onto the stumps, inside edge towards the short fine leg region. Enough time for the batters to get 2 runs. 2 runs added to the total, 112 for 3. 1 ball remaining in the 14th over. 37 balls remaining. And 62 runs to get. So the required rate is over 10 again. Last ball of the over. This time outside off stump, and he's middled the ball. The fielder is coming behind it and restricted it to only 1 run. So a decent over, 7 runs of the over, and the required rate has climbed over 10 now. 113 after 14 overs, 6 overs remaining, 61 runs to get, 7 wickets in hand. So we're in for a nail-biting finish of this game between Denim Craft and Factdate.
Six overs remaining in the game, 113 for 3. With 7 wickets in hand, required rate is 10.17. Rizwan Qureshi is timing the ball well. He's batting on 17 of 10 balls. Tariq Haroon, he's faced 13 balls for his 13. Last 36 balls of the game. At the same stage, Denim had crossed the 130 run mark. So Denim were ahead, but Factdate bowled really well in the middle overs, especially from the 12th to 18th over. They were able to restrict Denim to 173. Now first ball of the 15th over. Flighted delivery, slower through the air. The batsman missed the line of the ball and missed the stumps as well. Dot ball to start the over. Bowler कौन है? Bowler कौन है? Ali is the bowler this time. Short ball and only 1 run added. There was a chance for getting 2 runs, but the first one was taken rather slowly. So the fielder managed to restrict the batters to 1 run. 1 run of the first 2 balls of this over. Required rate now climbing with every dot ball and every single, as they require doubles and boundaries from here on. Rizwan Qureshi now on strike. Ali is the bowler. Simon, another flighted delivery, slower ball. Angle towards the short third man fielder for 1 more run. 115 for 3, 3 balls remaining in the 15th over. 33 balls remaining. Fourth ball of the 15th over, important ball coming up. This time another slower through the air delivery, but it was wide. He has to re-bowl that one. 1 run added. Every run is important here. Every ball counts from here on. Another loopy delivery outside off stump and another wide. Certainly, it's 4 runs of first 3 balls. 2 extra deliveries, 2 extra runs. Ali has to re-bowl this ball again. This time another flighted delivery and straight to the point fielder. Agha Sabir is the fielder. He dropped one early on the long on region, but this time makes no mistake. Good low catch. Tariq Haroon is the batter. He was struggling to find the middle of the bat. Finally hit straight one to the point fielder. Agha Sabir makes no mistake this time. 117 for 4 now. And what a crucial time to get a wicket. Khurram Baloch is the new batter. And he's walking in at a time where he has no time to settle in. He has to go from ball 1, as the required rate has climbed to near 11, 10.69 to be precise. Rizwan Qureshi is still on the crease. He's batting well. He's scored 18 of 11 so far. 2 balls remaining in the 15th over. 32 balls remaining, 57 runs to get.
ऐसा सामने से कर दिया बैठ जा आराम से सारी गल आउट हो गया खत्म Fifth ball of the 15th over. Khurram Baloch on strike. Flighted delivery this time. Typical left arm bowler delivery. Pitched on middle and off and spun straight into the hand of the wicket keeper. Dot ball. The last ball of the 15th over. He's bowling slower through the air, giving in flight. Another flighted delivery pitched on outside off stump. Khurram Baloch managed to guide it towards the deep cover region. 1 run added to the total. 118 for 4 now. Factdate. They require 56 runs of the last 5 overs. The required rate has now jumped over 11, 11.20 to be exact. The boundary every over is a must for Factdate now. Rizwan Qureshi batting on 18. Khurram Baloch just arrived in the crease. With 6 wickets remaining, you must be backing the batting team to get the runs. But we've seen the batters struggle to get runs anything above over 9 run and over. Has not been easy for the batters. So Denim Craft in complete control for now. Factdate needs a good big over. 15 to 18 runs over. Won't be easy though, but it is T20 cricket. 2 boundaries can change the game. Asim Jah, the skipper of Denim Craft, is in to bowl again. 14 runs Asim Jah has conceded in his 2 overs. He'll be happy if he gives away 7 runs in this over, as over 11 runs are required. The last 5 overs, 56 runs to get of the last 30 balls, 6 wickets remaining. Khurram Baloch is on strike. First ball of the 16th over, Asim Jah. And this time it was a loose delivery to start with. It was a half tracker down the leg. A free hit for the batsman. Khurram Baloch won't miss out on these. So a boundary to start the over. Pressure now on the bowler. 52 runs now of 29 balls. So good start to the over. Can they continue with the momentum? That is the big question. Second ball of the 16th over. This time another short delivery. This time hit straight to the fielder at long leg. 1 run added to the total. 123 for 4, 51 runs required of 28 balls. So far, 5 runs of the first 2 deliveries. Rizwan Qureshi on strike. This time a fuller delivery
He's looped it up. Chance for the fielder. And he drops it. Insult to injury. 2 more runs added. Has he dropped the match? That is the question. Because Rizwan is striking the ball clearly. Great opportunity for the fielder. Muhammad Ali was the fielder at short fine leg. Two more runs added to total 7 runs of the first 3 balls. This time he makes room, and how many times we've seen that the batsman gets a boundary on the very next ball that he's been dropped. So the bowler seems disappointed as 11 runs have been scored of the first 4 deliveries. Rizwan Qureshi should have been dismissed, but in return, he scored 2 boundaries of this over, and the required rate is now under 10 again. 45 runs to get off 26 balls. Full ball this time, 1 run added to the total, so 12 runs off the first 5 balls. Good over for Factdate. This was the kind of momentum they were looking for. Khurram Baloch now on strike. Last ball of the 16th over, 130 for 4. Factdate. Can he manage to score a boundary of the last ball of this over? So big ball coming. Asim Jah. This time down the leg and wide ball. So 13 runs of the first of 5 deliveries. The skipper has bowled. Last ball of the over. This time outside off stump, guided towards the deep cover region. Only 1 run added. So good over for the batting team. Good over for Factdate. 14 runs off the over, 132 for 4. And now they require 42 runs of the last 4 overs with 6 wickets remaining, 2 set batsmen on the crease. We're going towards a nail-biting finish where anything can happen from here on. 2 quick wickets or 2 boundaries in an over can change this game over. It's in balance currently, still anybody's game. Pressure now on the bowling team as 14 runs were conceded in the last over. Khurram Baloch is on strike. Fahim Bukhari now replaces Mohammad Ali. Fahim Bukhari has been expensive so far, given away 31 runs in the 3 overs he's bowled. He's wicketless so far. Can he change that in this over? Khurram Baloch on strike. This time, a quicker delivery. Well bowled. Dot ball to start with. Khurram Baloch will definitely try to use his long levers to hit the ball out of the park, but very smart bowling by Fahim Bukhari. Dot ball to start with. Second ball of the 17th over. This time another well bowled outside off stump, quicker delivery. The batsman got no room, couldn't connect, so 2 dot balls to start the over. Brilliant start. This time another quicker delivery on the pads. He middled the ball but straight to the fielder. 1 run added to the total. So only 1 run of the first 3 balls, and the required rate that started off near 10 has jumped over 12 now. 41 runs to get off 21 balls.
This time quicker delivery, ballooned up in the air, simple forward catch for the short fine leg fielder. Rizwan got a life in the previous over, but this time no mistake done by the fielder. Asif Siddiqui was the fielder, so 133 for 5. Factdate. But the credit goes to Fahim Bukhari for bowling such a brilliant over so far at such a crucial stage. He's given away only 1 run and picked up the wicket of the settled batter Rizwan Qureshi. Rizwan dismissed for 25 or 15 balls. And now the game is completely in favor of the bowling team as 2 new batsmen are on the crease. 40 runs to get off 20 deliveries, 41 of 20 balls. Zulfikar Lahiri is the new batsman in. Fahim Bukhari given away only 1 run of the 17th over of the inning. And if he can finish well, bowl 2 more good balls, he definitely has done a brilliant job for his team. Fahim showing all his experience, varying the pace and line of the ball. 5th ball of the 17th over, 1 run off it so far. This time a quicker delivery outside off stump. Only 1 run added to the total. Zulfikar Lahiri off the mark. But singles won't help. Factdate right now, they require boundaries as the required rate has jumped. 12, last ball of the 17th over. Khurram Baloch on strike, this time quicker delivery and hit it towards the cover region, well fielded by the fielder, only 1 run added. So after 17 overs, 135 for 5, Factdate, they require 38 runs of the last 3 overs. That is 38 runs of 18 deliveries. Required rate now near 13, which won't be an easy task at all, keeping in mind that there are 2 new batsmen on the crease. Can Khurram Baloch turn it around for Factdate? They need 2 to 3 boundaries in this over to come back in the game. Another change in the bowling. Azizullah will bowl his last over of the day. Given away 20 runs so far and picked up 1 wicket in his 3 overs. Khurram Baloch on strike. Azizullah. पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ. Next ball of the over, he wanted to hit it out of the park, couldn't middle it at all, and only 1 run added. Singles won't harm Denim Croft right now. They'll be happy to give away 6 singles in the over. Boundaries is what Factdate is searching for. Second ball of the over, this time quicker delivery outside off stump and straight to the fielder towards the long on region. Another single added to the total. So 2 runs of the first 2 balls. Required rate now climbing with every ball. It has crossed 14 now. 37 of 16. And beautifully bowled. Another single
Singles is something that Denim Craft will be really proud of right now. Leg by signal by the umpire. So 3 runs of the first 3 balls, and now 36 runs of 15 balls. The required rate climbing with every passing ball, and this time very well bowled, completely beaten, and he's gone. Stumped out. What an over by Azizullah. The previous over was bowled very well. Last over, only 3 runs were conceded by Fahim Bukhari. And this over has given away 3 runs and picked up another wicket. So now the hopes and chances for Factdates goes even low. Ubaid Mangi is the new batter, as Factdate require 36 runs of 14 deliveries. The required rate is now 15 runs and over. So they require 3 runs a ball. बना के लिए 14 balls remaining, 36 runs to get. Ubaid is the new batsman. Khurram Baloch still on the crease. This time down the legs, and wide ball given. The batsmen are hurrying for 2. They do require runs. So 3 runs added to the total without a ball being bowled. So 33 runs of 14 balls. Every run counts here. Denim Craft would like to end this over without conceding any more boundaries, whereas Factdate would love to score a boundary or 2. Fifth ball of the 18th over. Azizullah ready to bowl. Ubaid is on strike. Time fuller delivery outside off stump, beautifully bowled, and it's a dot ball. So 33 runs of 13 deliveries. Another full delivery, and only a single taken of the last delivery. No real damage done. 32 runs to get of the last 2 overs. 16 runs per over is now required. That means they require at least 3 boundaries in this over if they want to stay in the game. Pen to them. Pen. Agha Sabir will now bowl the 19th over. Use all his experience here. आज 5वां मैच है ना आज. And what a hit, what a start to the over. He's hit it over mid-wicket for 6. It's a long boundary and just about the idealistic start to the over. They required 32 of 12 and now it's 26 of 11. Factdate will start to believe. What a start to the over. There was nothing wrong with the delivery, but very well picked up by the batsman. Ubaid was the striker. This time shorter delivery, big appeal, and he's out.
Agha Sabir strikes back. The batsman seems to be very disappointed. He cannot believe the decision, but he has to go. Denim Craft are celebrating. So 6 of the first ball and wicket of the next ball. "26 runs of 10 deliveries." कौन कौन आ रहा है आगे? नहीं, गेस्ट ये हो गए, ये हो गए, एक और कोई चाहिए। चलो पकड़ते हैं किसी। 10 balls remaining in the game, 26 runs to get. 7 wickets down for Factdate. So they need 5 boundaries in the 10 balls remaining. यार किसने बोला 7 8? यहाँ पे लिखा हुआ है ना 7 भी लिखे हैं, 8 कौन बोला? वहाँ लिखा 8 वो कह रहे हैं, 8 वो कह रहे हैं। So this time the ball was on the leg stump, a free hit for the batter, 4 runs. So Factdate continues to fight. They're not giving it up. 10 runs and a wicket from the first 3 deliveries of the second last over. 22 runs to get of 9 deliveries. And if they're able to manage to get another boundary or 2 in the remaining 3 balls, they're still in the game. So we've seen the 6 of the first ball, wicket of the second, and then a boundary of the third. Big ball coming, Agha Sabir, bowling his first over of the day. This time, fuller delivery outside off stump. The batsmen are running hard, and they're going for the second run, taking on the arm of the deep cover fielder. Managed to get 2 more runs, so 20 runs of 8 balls. Agha Sabir bowling his first over, and what a time to bowl. This is 19th over of the game. 8 balls remaining, 20 runs to get. Khurram on strike. Can the duo of Khurram win the game? Khurram Ali and Khurram Baloch. This time the ball was down the leg and wide ball. Every run here counts. So Agha Sabir has to re-bowl that one. It's given away 13 runs so far. Still 2 balls remaining. 2 more balls remaining in the over. This time a fuller delivery and he's gone. Second wicket of the over, bowling wicket to wicket. This over has been a roller coaster ride. We've seen boundaries, we've seen a wide ball, we've seen 2 wickets. And now 8th wicket down for Factdate. Khurram Ali was the batter. He was able to get a boundary of the previous ball. And we've seen a batsman getting a boundary and getting dismissed on the very next ball for the second time in this over. So an eventful over, 6 wicket, 4, 2 wide and a wicket. So 13 runs with 1 ball remaining, while Factdate requires 19 runs of 7 deliveries. We're moving towards an interesting finish, although the momentum is completely towards the bowling team. Denim Craft in complete command of the game. 155 for 8, last 2 wickets, 19 runs, 9 deliveries. The batsman has a free license. All he needs to do is swing hard and connect. And if he's able to get a 4 or a 6,
Factdate will start to believe again. The last ball of the 19th over. Agha Sabir. This time, ball outside off stump. He does connect, but unable to get the distance. But the batsman will manage to get 2 runs. So 15 runs of that over and 2 wickets. 157 for 8 Factdate. They require 17 runs of the last over. With 2 wickets in hand, they're still in the game. If they can get a boundary of the very first ball, this match becomes more interesting. For now, it's completely in control of Factdate. All the bowler needs to do is bowl 2 good deliveries in this over and the game is dusted. जाएगी बोले बहुत से डाले This time the bowler missed his steppings. So 17 runs of the last 6 deliveries. Asif Sheikh will bowl the last over of the day and he has 17 runs to defend, which is difficult for the batters. First ball of the last over, middled but straight to the fielder. The batsman will try to get 2 runs. They're running hard. There's an opportunity of a run out and he's safely home. The wicketkeeper is asking for a review, a referral. We're going to look at the replay. So he's safe. Second ball of the last over. Fuller ball outside off stump and he's edged it straight to the short third man fielder. And with this wicket, the hopes of Factdate also are over, as Factdate lost their 9th wicket for 59. हाँ विकेट 2 ले ली ना, 2 ले ली, कैच भी किया और रन भी किया। आगे रन भी देखा 59 और कैच है, वही रन लगा इसमें जरूरत नहीं। 59 किए, 2 विकेट लिए और कैच सही है। So 3 balls remaining in the game. 14 runs required, which is technically possible but seems unlikely as they have lost 9 wickets. This ball will decide the game. Fuller ball and he's cleaned it up. So this ball did decide the game.
Middle stump out of the ground. And Factdate have been bowled out for 160. So Denim won the game by 13 runs. And we'll join you shortly for the match presentation. Denim and Factdate, please come forward for the match presentation. I would request Factdate team members to come forward for the presentation. We're starting the presentation. Hello and welcome from the 35th Karachi Gymkhana Umar Associated Ramzan Cricket Festival, where match number 5 was played between Factdate Engineering and Denim. We had a fascinating game. Denim batted first and scored 173 and won the game in the end by 13 runs. So well played, Denim. I would like to introduce my presentation party for today. We have Mr. Majid with us, senior member of Karachi Gymkhana. We have Mr. Masroor Mirza with us, who is member of NCC, and our chief guest for today, Ms. Shameen Akhtar, senior member of Karachi Gymkhana. And we have with us Mr. Akhtar with us, the huge round of applause. Akbar Khan, I'm sorry for that. And a huge round of applause for our presentation party. So, time for the Man of the Match award. We had some interesting performances. Vadan Khan scored 42, 3 wickets were picked up by Asif Indian. Agha Sabir for his all-round performance, 59 runs of 39 balls, 8 fours and 1 6. And he picked up 2 wickets and he took a catch as well. So, 10,000 by
Perceptions, courtesy Mr. Mazhar Hussain, category of rupees 2000 by Toyota Central Motors, courtesy Shahzad Salim Godin, and gift hampers from Day Fresh, free voucher of 500 rupees from Angeti Restaurant, and gift hampers by Candyland, courtesy Mr. Masood Ismail. So we'd like to have a few words, please go ahead. बड़ा कमाल के लिए शुरू में ही मोमेंटम चेंज कर दिया था, पावर प्ले में गेम आपने अपनी तरफ ले आ गए थे, क्या चल रहा था? जी कल तो आप बैटला और एक बैटिंग जो है वो इतने रन नहीं कर सकी सर्कल में, तो यही सोचा था कि विकेट हैंड होगी और अगर से खेलेंगे तो वो फेल ऑफ किया, रिजवान ने था बहुत अच्छा से खेले, तो अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, तो एक अच्छा स्कोर हमने प्रोडक्ट किया और जल्दी वो डिपेंड एंड के अंदर थोड़ा सा मिस आउट कर गए, 20-25 रन लग रहा था शॉर्ट, लेकिन बॉलर ने कवर कर लिया था। हाँ थोड़ा सा उनकी बॉलिंग भी अच्छी है और विकेट भी थोड़ा स्लो था, तो उनके हिसाब से रन बहुत अच्छे थे, बॉलिंग बहुत अच्छी थी, अच्छी बॉल की कंटिन्यू किया और मैच किया। Well played and all the best for the next match. So now I would request Mr. Masroor Mirza, if you can please present the souvenir for our chief guest. So that's all from the presentation today. We join you tomorrow for match number 6. Umar Associates will face off South End tomorrow. So we join you tomorrow. Until then, take care of yourself.